हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज की इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स का एनालिसिस करेंगे। तो इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग क्या करेंगे, दैट वील बी टॉकिंग अबाउट कि ड्रोन इंडस्ट्री क्यों ओवर द लास्ट 2 to 3 इयर्स एकदम सनराइज इंडस्ट्री बन रही है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोन इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या है, कि एक ड्रोन बनाने में क्या क्या पार्ट्स लगते हैं, टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, इंडियन प्लेयर्स कौन से, इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन से, एंड नॉट ओनली दिस, जहाँ पे ड्रोन की बात होती है वहाँ पे एंटी ड्रोन की भी बात होती है। तो हम एंटी ड्रोन सिस्टम्स की भी बात करेंगे अलॉन्ग विद द ड्रोन सिस्टम्स, विच विल गिव यू एन आइडिया कि कौन कौन सी इंडियन कंपनी इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। एंड आई विल रिक्वेस्ट you to sit with a pen and basically notebook to make notes out of this video, because ये एक सनराइज सेक्टर है एंड दिस वीडियो यू कैन रेफर टू ओवर एंड ओवर अगेन ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years, क्योंकि इस सेक्टर में डेवलपमेंट्स बहुत होंगी, because drone is increasingly becoming important and not just drones are becoming important, anti drone systems are also becoming important, and कौन सी इंटरनेशनल एंड इंडियन प्लेयर्स हैं हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। With this, let's start this webinar, and if you're excited for it, do drop a hell yes in the comment section below, because these webinars अब SOIC members के लिए exclusively कराते हैं, and हमने सोचा कि ये वाला webinar हम exclusively अपनी SOIC community के लिए रिलीज करेंगे YouTube पे, because sunrise sectors को आपको पढ़ते रहना चाहिए। And before we start this video, इस पूरे सेक्टर की जो प्रेजेंटेशन है जो हमने इस पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो में यूज करी है, दैट इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। विद दिस लेट्स स्टार्ट। Welcome to the session on drones and anti-drone landscape, which is a futuristic industry. Why do I call it a futuristic industry? Because it's an industry that is developing at the moment. So पूरा हम इंडस्ट्री का टाइम देखेंगे, इंडस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज देखेंगे, इंडियन प्लेयर्स देखेंगे, इंटरनेशनल प्लेयर्स देखेंगे। एंड इन वेबिनार से फायदा क्या होता है कि मेरे को खुद सीखने को बहुत मिलता है, आपको भी सीखने को बहुत मिलता है। एंड दिस इज अ न्यू इंडस्ट्री दैट वी आर कवरिंग, राइट। सो आइडिया क्या है कि हम बिजनेस मॉडल्स कवर करें डिफरेंट कंपनीज के, कि किस किस टाइप के बिजनेसेस इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट से, एंड I'll just show you one of the videos on a very interesting operation that happened. That was Operation Spiderweb. So let me just take you to YouTube, and I'll just open this video on Operation Spiderweb, and it's very interesting because it tells you how the modern warfare is being fought. So let me just open this one. Attacks on multiple air bases, one of the boldest attacks by Kyiv since Russia's invasion. On June 1st, Ukraine attacked 4 Russian air bases deep inside of Russian territory in a daring operation that was duped Operation Spiderweb. The operation involved Ukraine smuggling over months over 117 drones, hiding them inside wooden containers, and then loading them onto trucks. Then unwitting Russian truck drivers were remotely hired by Ukrainian operatives to drive the containers thousands of miles to different Russian air bases. And then at the same time, the wooden containers opened up and these drones flew out as they were approaching Russian airfields. What do you have number? Ukraine says they've hit 41 aircrafts, though Western estimates believe that at least 12 aircrafts were destroyed and up to 20 in total were damaged or destroyed. These aircrafts were used daily by Russia to target Ukrainian cities, to bomb Ukrainian people. In total, Ukraine put the damage that they inflicted on Russia at 7 billion. But in reality, the damage is even higher because most of these planes were Soviet airplanes, which Russia no longer produces. This was, beyond its strategic value, this was also a symbolic way for Zelensky and for Ukraine to say to Trump that they still had cards in this war. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, I think the impact of this attack will go way beyond the Russia-Ukraine war. Military commanders across the world will be watching closely what Ukraine just did and thinking how this could happen to them, whether they're in the US or in the UK. Drones are a new way of waging war, and what Ukraine just did showed that you don't need to have a big army to be able to inflict such damage. And I think military leaders around the world will be thinking, how can they protect their aviation from these cheap drones? Right. So basically,
what Operation Spiderweb was is that ki Ukraine's via trucks, right? So they like paid a lot of Russian drivers, and via that, what they did is that they sort of sent 117 drones inside Russia. And what they did is that these drones का पूरा मतलब एक drone का cost, we'll see how much it was costing. So one drone was between $400 to $1,000, and these were low cost drones which were equipped with explosives, and they were locally modified. And once they sent these drones inside Russia, and total जो operation का cost that was between $300,000 to $500,000, and these drones caused a damage of $7 billion plus. Now, that's the interesting part, because they hit close to 20 to 41 of the Russian aircrafts, and each Russian aircraft is like for $300 million. So just imagine $300,000 of like a car operation has caused a damage of $7 billion. So economic impact ratio क्या है? That is 1:15,000, right? So every $1 spent by Air Ukraine inflicted a damage of $15,000 in losses. Now, just to ask you, don't you think this is something that is like changing the basic fabric of the modern warfare? This operation का example जो है, what do you think? Now, just imagine कि if Ukraine had to send their army people inside Russia, पहली चीज तो वहां तक पहुंच भी ना पाते, right? And दूसरी चीज एक human loss बहुत होता है life का. These numbers are, there are different sources. Basically, there are different reports from Guardian, and there are different reports from Daily Mail, and BBC की भी reports हैं. You can check them. Ukrainian military ने भी बहुत सारे डाले हैं. But these are just rough approximations. I think 1:15,000 or 1:20,000 के बीच में. That's the net impact cost that they caused. Now, this is what they did, is that they hit Russian air bases thousands of kilometers from the border in a coordinated drone attack. तो different जगह पे 3-4 Russian air bases के पास trucks गए, and trucks में से basically the container opened and drones started flying. And these drones were low cost drones, but they were basically fitted with ammunition. तो उसके अंदर payloads लगे हुए थे, right? So that is how like this thing has happened, and we have just seen the video. But now let's look at another example. आज से 6 महीने पहले कौन सुन रहा था about Red Sea crisis? How many of you heard about the Red Sea crisis? कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल में बात होती थी कि रेड सी क्राइसिस है इस टाइम पे, कि बिकॉज ऑफ रेड सी क्राइसिस हमारा फ्रेट कॉस्ट बढ़ गया है, हम लोग बेसिकली शिप नहीं कर पा रहे टाइम पे. डिड यू हियर अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि शिपिंग कॉस्ट इज गोइंग अप, राइट? कि हुथीज वर टारगेटिंग द शिप्स. नाउ आस्किंग इट, हाउ वर दे डूइंग इट? व्हाट वर दे यूजिंग? दे वर यूजिंग अ मिक्स ऑफ ड्रोन्स, अनमैन्ड बोट्स एंड मिसाइल्स, राइट? जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा जो शिपिंग रूट्स है, राइट, दैट कैन बी डिसरप्टेड by something that is unmanned. Matlab, it caused disruption worth billions, right, to the global trade. Now, this is the example ki drones and anti-drones, why they will become like powerful, or why it will become a big industry going forward in the future. Drone तो होएगा, but anti-drone systems भी चाहिए रहेंगे, right? Similarly, India versus Pakistan, हमें याद है हम लोगों को एक सेशन कराना था कैपिटल मार्केट्स पे, but we had to sort of basically delay the offline session. तो याद है post 7 PM एकदम सारी लाइट्स बंद हो जाती थी. post 6 PM, if someone is from जलंधर और अमृतसर, post 6-7 PM सारी लाइट्स टोटल ब्लैकआउट हो जाता था, ताकि कोई भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कुछ दिखे ना. फर्स्ट टाइम आई थिंक हिस्ट्री में गोल्डन टेम्पल का भी बेसिकली ब्लैकआउट हुआ था, राइट? तो आई हैड सम ऑफ द रिलेटिव्स लिविंग ओवर देयर, तो आई यूज्ड टू स्पीक टू देम, राइट? सो दैट इज इंटरेस्टिंग. जम्मू ऑल्सो, राइट? तो जम्मू में तो बहुत कॉमन था. सो अगेन दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर, राइट? जो आप देखते थे कि इंडिया थी एंटी बेसिकली जो मतलब L-70 गन्स काम करती थी, दैट वाज एंटी ड्रोन गन्स जो काम करती थी, दैट वाज फॉर हार्ड किल. तो आपको दिखता है कि स्काई में कुछ फट रहा है एकदम पटाखे की तरह. So that was basically the guns which were basically shooting down the Pakistani drones. And Pakistani drones came from Turkey, right? तो इंडियन ड्रोन्स के इसराइल से इंडिया ने ड्रोन्स लिए थे, हैरब ड्रोन्स नाम के. तो इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, जिससे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, इंडिया ने वहाँ से ड्रोन्स लिए थे. एंड इंडिया ने भी सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज वन ऑफ देयर लाइक एविएशन डिफेंस सिस्टम्स की गन को, right? But again, example क्या है कि some of these drones or drones which is like smaller in size can cause damage which is this big. Now, another example is that of a, let's take एक loitering munition करके ड्रोन होता है. loitering munition क्या होता है? कामिकाजी ड्रोन. तो आपने एक सोलर इंडस्ट्रीज का ड्रोन देखा होगा नागस्त्रा के नाम का, या फिर जो हैरब ड्रोन्स की बात करते हैं जो इसराइल के इंडिया ने यूज करे थे. तो अगेन
बैटल टैंक का कॉस्ट इज एनीवेयर बिटवीन $8 million to 17 million. मॉडर्न लार्ज वॉरशिप का कॉस्ट 1.5 to 3 billion डॉलर के बीच में. F-15 जेट का कॉस्ट 90 million to 110 million डॉलर के बीच में. Whereas अगर इफ यू लुक एट द कॉस्ट ऑफ वन सिंगल रफाइल जेट, इट इज इंडिया का टोटल डील फॉर 26 रफाइल जेट $7.4 billion का हुआ था, राइट. एंड इंडिया में आज भी स्क्वाड्रंस की शॉर्टेज है व्हेन इट कम्स टू बेसिकली आर एयरफोर्स. बट ड्रोन्स का ऐसा यूसेज है कि लॉइटरिंग म्यूनिशंस, दैट इज द कामाकाजी ड्रोन्स, is that why is it the future of warfare? A, because there is no human involved. B, why so? Because the cost inflicted versus the economics of the entire thing is like there's a hugely favorable basically risk reward ratio in using drones. And C, because it can fly forward, backward, right and left, right? So it is more ergonomic as well. तो स्पीड पे डिपेंड करता है, बट दीज आर लो कॉस्ट एसेट्स विच हैव अ पोटेंशियल टू कॉज हाई कॉस्ट इम्पैक्ट्स, राइट. अब किसी भी वेपन सिस्टम से एग्जांपल लेके देख लीजिए ड्रोन का, एंड यू विल फाइंड दिस टाइप ऑफ एन एनालिसिस कि एक ड्रोन का कॉस्ट कितना है. एट दी एंड जो ओल्ड वॉरफेयर के जो बेसिकली अपने वेपन्स हैं, चाहे वो फाइटर जेट हो गया या मॉडर्न लार्ज शिप्स हो गया, मेन बैटल टैंक्स हो गया, इनका क्या कॉस्ट है. इवन तो इनका भी यूसेज है लाइक मॉडर्न डे वर्ल्ड में, बिकॉज क्या आएगा कि सप्लीमेंट्री ड्रोन्स आएंगे. जैसे अभी एक ड्रोन्स की बात हो रही है, विंगमैन ड्रोन्स की. व्हाट आर विंगमैन ड्रोन्स? तो विंगमैन ड्रोन्स बेसिकली एक यूएस की कंपनी है एंड्यूरल करके जो डेवलप कर रही है. इंडिया के अंदर भी सम ऑफ द स्टार्टअप्स आर वर्किंग इन इट एंड सम ऑफ द कंपनीज आर डेवलपिंग इट. बेसिकली आपका फाइटर जेट उड़ेगा एंड उसके साथ विंगमैन ड्रोन्स होंगे. तो दीज ड्रोन्स विल बी यूज्ड एज अ डिकॉय. दीज ड्रोन्स विल कॉज बेसिकली जो बेसिकली एनिमी के रडार्स होते हैं उनको जैमिंग करेंगे, and they will confuse the radar at the end of the day, right? They can also be used as a decoy, right? So that type of usage will also come. Similarly, large warships में भी ये usage देखेंगे आप कि मतलब अभी क्या हो रहा है, मतलब हम आगे देखते हैं. तो this is something that has happened in the Ukraine-Russia war, is that a lot of subsea cables are being cut. So most of the internet traffic in the world goes through undersea cables, right? तो subsea cables कट हो रही हैं. किसी ने अगर नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का देखा हो तो that was basically blown up. We don't know who are the perpetrators, but Nord Stream गैस जो रशिया से गैस लेके आती थी यूरोप के लिए, तो दैट गैस पाइपलाइन वाज ब्लोन अप एंड अ लॉट ऑफ अंडर सी वॉरफेयर की भी बात हो रही है. तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली लाइक अंडर द सी अनमैन्ड व्हीकल्स चाहिए रहेंगे. सो दैट इज ऑल्सो अ न्यू यूज केस ऑफ ड्रोन्स दैट इज डेवलपिंग, राइट. तो अगेन यहाँ पे द वॉरशिप्स और द यहाँ पे इंडिया, लाइक इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जो वेसल्स होंगी, वॉरशिप्स होंगी, दे विल बी कोऑर्डिनेटिंग विद द सबमरीन्स एंड अनमैन्ड सबमरीन्स की भी बात हो रही है. तो दैट ऑल्सो कंपनीज आर ऑलरेडी डेवलपिंग. बट पूरा जो मॉडर्न वॉरफेयर का एक न्यू एंगल है दैट इज चेंजिंग. तो किल चेन करके एक बुक है जो आप सब पढ़ सकते हैं, दैट टॉक्स अबाउट दिस इंटायर थीम. Like they spoken about this theme 2-3 years back. It's one of the award-winning books that all of you can read. But modern warfare change हो रही है इन सारे reasons की वजह से. तो अभी हम देखते हैं कि different types of drones क्या है. उसके बाद हम इन सारे drones की videos भी देखेंगे एक बारी. तो एक तो drones होते हैं that is surveillance and reconnaissance drones. So these are known as ISR drones. So these are eyes in the sky drones which gather real intelligence without risking a human pilot. They are equipped with high-resolution cameras, thermal sensors, radars to monitor enemy movements, map terrain, and provide situational awareness. तो इंडिया में एक और एक ड्रोन था टापास करके, बट दैट ड्रोन डिडंट सक्सीड. 2022 में इट वाज शेल्फ्ड. यूएस का एक ड्रोन है RQ-4 ग्लोबल हॉक करके. इजराइल का एयरमिस 900 करके एक ड्रोन है विच इज बाय एल्बिट सिस्टम्स. बट दीज आर ड्रोन्स विच आर बेसिकली, इसको हम ISR ड्रोन्स कहते हैं, विच आर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसांस ड्रोन्स, राइट. सो दीज आर ड्रोन्स जो अगेन अगर आप आइडिया फूड जैसी इंडिया में कंपनी पढ़ते हैं, सो दे आर स्पेशलाइजिंग इन द ISR ड्रोन्स, राइट. जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं उसके अंदर स्पेशलाइज कर रहे हैं. तो एक टाइप के ड्रोन्स ही हैं. सेकेंड टाइप के ड्रोन्स क्या हैं, दैट इज अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स, दैट इज UCAVs. So these are also the drones which are armed with missiles and bombs. And these drones provide militaries a way to project force from a remote location, keeping human pilots out of the harm's way. I think US का एक बहुत famous drone है जो I think $30 million का है, which is made by Boeing and Lockheed Martin. So that type of drone is this an example of UCAVs. That is unmanned combat aerial vehicles. These are armed with weapons like missiles and bombs. So this is the second type of drone. Third type of drone is loitering munitions, or also known as hunter killer drones. तो hunter killer drones, kamikaze drones और loitering munition क्या करते हैं? So these are drones designed to loiter in the air over a target area and strike over when an enemy asset is identified. They are a combination of a drone and a missile. Basically
व्हाट्स द वर्ड कामाकाजी इन वेयर डज इट कम फ्रॉम? तो जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर थी, सो दे स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ वेपन्स, राइट? पर उनके पास प्लेन्स बहुत सारे थे, पायलट्स भी थे, बट पायलट्स भी अनट्रेन्ड थे। तो क्या करते थे, अनट्रेन्ड पायलट्स को इतना ट्रेन कर देते थे कि डू द कामाकाजी अटैक, कि अगर कोई यूएस की शिप खड़ी है तो जस्ट डू अ सुसाइड मिशन इनटू द शिप, राइट? बेसिकली मिसाइल विसाइल तो क्योंकि अगर यू हैव रन आउट ऑफ आर्म्स, तो जस्ट टेक द प्लेन एंड बेसिकली पुट इट इन द शिप, राइट? तो इट्स लाइक अ सुसाइड मिशन. So that is where the word kamikaze comes from. So this is the third type of drone, which is a loitering munition, which is also known as a kamikaze drone. तो ये ड्रोन बेसिकली टारगेट एरिया के ऊपर लॉइटर करते हैं एंड एनिमी एसिड आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन बूम, इट्स लाइक अ सुसाइड अटैक. बट दे ऑल्सो कैरी पेलोड. इट इज़ हाईली डिस्ट्रक्टिव इन नेचर. एंड दिस इज जो अगर सोलर इंडस्ट्री का नागास्त्रा ड्रोन देखते हैं तो वो इसका एग्जाम्पल है. इंडिया ने जो हैरप ड्रोन यूज करे थे ऑप सिंदूर में, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कामाकाजी ड्रोन. तो कामाकाजी ड्रोन की भी इंडिया के अंदर प्रोक्योरमेंट बहुत बढ़ रही है. आईएसआर ड्रोन्स की भी बढ़ रही है, यूसीएवीज की भी बढ़ रही है. अगर किसी ने कॉल ऑफ ड्यूटी करके एक गेम खेली है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी में जो हंटर किलर ड्रोन है, दैट इज द लॉइटरिंग म्यूनिशन. जो अगेन इफ यू गेट अ यूएवी, जब आप यूएवी पे क्लिक करते हैं तो एनिमी की पोजीशन मैप पे आ जाती है. दैट इज द सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसांस ड्रोन्स, दैट इज आईएसआर. अगर आप वीटॉल यूज करते हैं, VTOL is somewhere where you can fire missiles over your over your enemies, or you can also, there is another thing which is a drone which has like a machine gun involved in it. So that's an example of the UCAV drones, right? But VTOL is a good example if someone has played. Fourth type of drones है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ड्रोन्स. तो कॉल ऑफ ड्यूटी में एक और भी ड्रोन का ऑप्शन है, दैट इज जैमर्स. तो ड्रोन कम्स एंड इट जैम्स द इंटायर मैप लोकेशन ऑफ योर्स वर्सेस योर एनिमीज. मतलब आपके एनिमीज आपकी लोकेशन नहीं देख सकते. So these are the electronic warfare drones. These are used to disrupt or intercept enemy communication, radar systems and GPS signals. For example, Idea Forge ने एक electronic warfare drone बनाया by the name of Nectra 5. Right, so that's an example of a electronic warfare drone. Right, तो जिसने games के लिए आपके लिए और easy हो जाएगा इससे identify करना. Then final type of drones are the logistics drones. These are engineered to carry heavy loads. These drones are used to transport supplies, ammunition, medical equipment to troops in remote or high risk areas. कुछ टाइम पहले मैं एक अनलिस्टेड स्पेस में मेट वन ऑफ द कंपनीज विच इज वर्किंग टू मैन्युफैक्चर लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स. तो आई वाज आस्किंग कि सर मतलब क्या यूज़ है इसका. तो ही वाज गिविंग मी सम स्टैट्स कि आई थिंक मैं अभी एक पॉडकास्ट में भी सुन रहा था कि इंडिया 600 करोड़ म्यूल्स पे स्पेंड करती है हर साल टू ट्रांसपोर्ट थिंग्स इनटू हायर ऑल्टीट्यूड रीजन्स. बट लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स, जैसे अगर एग्जाम्पल लेते सियाचिन ग्लेशियर का, राइट, जहाँ पे विच इज़ द हाईएस्ट और द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वॉर लाइक इन द वर्ल्ड. मतलब दैट्स द, इससे ऊपर ऑल्टीट्यूड पे वॉर नहीं हुई अभी वर्ल्ड के अंदर, या फिर इससे ऊपर कोई मतलब बेसिकली बैटल नहीं हुई. तो वहाँ पे टू बेसिकली इवन जो कारगिल का एग्जाम्पल है, तो मैं उस पर एक पॉडकास्ट सुन रहा था कि कारगिल का जो इंडिया वॉर जीती थी उसमें पीछे जो लॉजिस्टिक्स की एक इन्वॉल्वमेंट थी, दैट वॉज वेरी इंट्रिकेट. बिकॉज कि दे केम ओवर अ हिल टॉप एंड उस हिल टॉप से इंडिया के सप्लाईज वो लोग चोक कर सकते थे. बट हाउ द इंटायर ऑपरेशन वाज डन सो मेटिकुलसली बाय आवर आर्मी टू सॉर्ट ऑफ गो अराउंड इट एंड टू मेक श्योर टू सेंड सप्लाईज, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आई थिंक वो मतलब 20-25 दिन ही आते जब आप सप्लाईज भेज सकते हैं अच्छे से. So that entire thing was basically covered in that podcast I'll share. Actually, I've heard a lot of military podcasts for this particular session. For example, taking logistics to Siachen Glacier के आसपास जो अपना war basically हो रहा है, तो that is again, these are the drone usage of logistics drones which comes over in, right? So again, one of the Indian companies has done a JV with Israel's Heaven Drones to build basic logistics drones in India. Similarly, I think Idea Forge has also built some of the logistic drones which are there in India, right? But example है कि यही 4-5 तरीके के drones होते हैं. फिर 2 और चीज़ें होती हैं, एक मेल होता है और एक HALE होता है. तो ये भी मैं आपको एक बार बेसिकली एक आपके लिए एकदम वो कर देता हूँ क्लैरिफाई, ताकि आपको टर्म्स में कोई डिफिकल्टी ना हो. तो HALE क्या है, हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म स्टेशंस, whereas MALE क्या है, that is medium altitude platform stations, right? So these are the type of drones which can also these are like the high altitude platform stations or HAPS or HALE drones. These are the type of drones which can have a higher altitude, or military drones that can fly above even 60,000 feet over 32 hours, right? Whereas जो दूसरे type of drones होते हैं, these are the MALE drones, which is medium altitude long endurance drones. These are the type of drones which can fly between an altitude window of 10 to 30,000 feet, right? So typically like extended duration क्या है इसका 24 to 48 hours का. तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि MALE और HALE ये भी एक टर्म है जो इस इंडस्ट्री में आप इंकाउंटर करोगे.
इट इज़ नथिंग बट वन इज़ हायर ऑल्टीट्यूड, वन इज़ मीडियम ऑल्टीट्यूड इन नेचर, राइट? तो इंडिया में अभी ड्रोन की इंडस्ट्री बनी रही है. इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में सम ऑफ द कंपनीज हैव गॉट ऑर्डर्स एंड अ लॉट ऑफ कंपनीज आर करेंटली डूइंग फील्ड ट्रायल्स टू डेमोन्स्ट्रेट कि उनके मेल एंड हेल ड्रोन्स है, दे कैन एक्चुअली बेसिकली वर्क इन द फील्ड, राइट? सो अनदर टाइप ऑफ ड्रोन है जो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल और देता हूँ, दैट इज टेस्टिंग ड्रोन्स और टारगेट ड्रोन्स. तो टारगेट ड्रोन्स क्या होते हैं? These are drones used for training and weapons testing or simulating enemy aircraft to provide realistic practice scenarios. Now let me ask you, अगर आपको एंटी ड्रोन वॉरफेयर या फिर आपको एंटी ड्रोन सिस्टम्स को टेस्ट करना है यूजिंग आकाश मिसाइल्स और एनीथिंग एल्स, तो आप रियल ड्रोन पे यूज करेंगे तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, राइट? Whereas अगर आप, आई थिंक एक कामाकाजी ड्रोन का कॉस्ट एनीवेयर बिटवीन 1 to 2.5 करोड़ पड़ता है इंडिजिनाइज्ड कंटेंट का. बट आप उसको अगर टेस्टिंग ड्रोन पे यूज करेंगे विच इज एट अ सिमिलर स्पेसिफिकेशन बट इट इज एट अ फार चीपर कॉस्ट. सो व्हाट विल बी द ऑल्टरनेटिव दैट द आर्मी विल टेक इज अ टेस्टिंग ड्रोन, राइट? मतलब अगर आपको फील्ड में प्रैक्टिस करके देखना है तो प्रैक्टिस या टेस्टिंग ड्रोन्स में होता है. तो दीज आर नोन एज टारगेट ड्रोन्स. So this is also a category of drones that exists, right? So this is also a category of drone that exists, testing drones, right? Medium altitude or high altitude, that's the full form of male and hill. So that gives you a very good idea, I think. Matlab, just remember male se medium altitude, right? So and hill se HALE se high altitude, right? So this is the example that is medium altitude long endurance, that is male drones, and high altitude long endurance, that is HALE hill drones. So that I think should clarify, right? तो बस आप medium altitude high altitude से याद रखिए, आपको याद रहेगा. So then there are these target drones which are used. I think so there is another company India के अंदर Anadrone करके है. So it's like a significant player. I think इनका credit rating report पढ़ रहा था मैं. So they have delivered more than 1,000 plus target drones to various end users in India. And this is also a type of category of drones that exists. नाउ ड्रोन्स की क्लासिफिकेशन आप प्रोपल्शन टाइप से भी कर सकते हैं. तो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स होते हैं. दीज रिजेंबल स्मॉल एरोप्लेन्स. दीज ड्रोन्स आर हाईली एनर्जी एफिशिएंट, कैन कवर वास्ट डिस्टेंसेस. हाउएवर दे रिक्वायर रनवे टू टेक ऑफ एंड लैंडिंग. फिर मल्टी रोटर ड्रोन्स होते हैं, हाइब्रिड वीटॉल होते हैं, स्वार्म ड्रोन्स होते हैं, नैनो ड्रोन्स होते हैं. इसमें बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि बेसिकली दिस इज द, यू हैव टू रिमेंबर द स्वार्म ड्रोन्स के लिए. तो बेसिकली प्रोपल्शन टाइप पे होते हैं कि आपके ये अगेन वीटॉल होता है, दैट इज वर्टिकल टेक ऑफ. फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट है, राइट? इनके विंग्स एकदम फिक्स्ड है, राइट? जैसे अगर आप सोलर इंडस्ट्री का बेसिकली नागास्त्रा देखते हैं तो दैट्स अ फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट. सो किस टाइप का प्रोपल्शन यूज कर रहे हैं ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एंड यूसेज. जैसे मल्टी रोटर ड्रोन्स जो है, दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर सिविलियन पर्पसेस. तो अगेन जैसे मेरा नेफ्यू है, वो उसको ड्रोन बड़ा उड़ाना पसंद आता है, मतलब उसको बहुत छोटा सा ड्रोन है तो उसको बड़ा फन आता है उससे. तो दैट्स अ मल्टी रोटर ड्रोन, राइट? तो उसके पास मतलब देयर आर बेसिकली डिफरेंट रोटर्स विच आर फिटेड इन इट. Then there are swarm drones. So swarm drones is a technology of the future, and even nano drones. So swarm drones will be using the usage of AI, मतलब artificial intelligence use होगा swarm drones में, because these will be small group of drones which will have a coordinated attack, right? तो coordinated attack करेंगे एकदम on the enemy defenses or cover large areas of reconnaissance, right? So again, these are small drones which will have a coordinated attack on the basically the enemy defenses. तो किसी ने चाइना के अंदर देखा कि वो ड्रोन से ड्रैगन बना लेते हैं या ड्रोन से काफी चीजें कर लेते हैं. एज एनी वन ऑफ यू ऑब्जर्व्ड कि वो जो ड्रोन शोज होते हैं चाइना के अंदर, आपको क्या लगता है? एक तो सिविलियन यूसेज, और चाइना में सब वो क्यों दिखाते हैं सबको कि हम लोग ये सब कर रहे हैं? अमानी वेडिंग में भी था. बट चाइना टुडे हैज 90% ऑफ द, राइट? सो चाइना टुडे हैज नियरली 90% ऑफ द ड्रोन मार्केट इन द वर्ल्ड, राइट? बिकॉज अभी से कुछ टाइम पहले 2022 तक एक चाइनीज कंपनी थी DJI करके. हाँ, राम टेम्पल के पास भी आई थिंक जो राम मंदिर है उसके पास भी आई थिंक हम लोगों ने ड्रोन शो करा था. बट चाइना आई थिंक एट अ टाइम दे हैव बीन सेटिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ हाउ मेनी ड्रोन्स दे कैन फ्लाई टुगेदर, राइट? ऑल ऑफ दैट इज टू स्केयर पीपल, इज टू प्रोजेक्ट पावर कि वी हैव द कैपेबिलिटी टू यूज स्वार्म ड्रोन्स, राइट? अगर आप उसका एक्सप्लिसिट मैसेज देखेंगे कि हाँ अभी हम रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, बट ये हम मिलिट्री पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं. बिकॉज चाइना टुडे हैज 90% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट शेयर. वन ऑफ द चाइनीज कंपनीज दैट इज DJI, राइट? यूएस के अंदर उनका 80% मार्केट शेयर है. इंडिया के अंदर 2022 से पहले इट वाज अ डोमिनेंट कंपनी. आज भी आई थिंक स्मगल हो गए DJI के काफी सारे बेसिकली ड्रोन्स आते हैं इंडिया में, बट बॉर्डर एरियाज के पास इट्स बैंड, राइट? तो these are basically used for reconnaissance and civilian usages, but still it is banned because कैमरा वैमरा नो वन नोज कि एट द एंड डेटा कहाँ जा रहा है या फिर कहीं अपने अगेंस्ट ही ना यूज हो जाए. देन फाइनली नैनो ड्रोन्स करके भी एक टेक्नोलॉजी आ रही है विच विल ऑल्सो हैव द AI इनेबल्ड इन इट,
तो ये सारी चीज़ें, ये जो एंड्यूरिल करके कंपनी है, जो यूएस की कंपनीज है, इस पर काम कर रही है. इंडियन स्टार्टअप्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू वर्क ऑन दिस. बट स्वॉर्म ड्रोन्स एज सच मैंने अभी इंडिया में बहुत कंपनीज का सुना नहीं है. आई थिंक एक अभय करके प्रोग्राम है अदिति चैलेंज के अंदर, विच आई थिंक एनाड्रोन 1, तो दैट इज देयर. बट एक नैनो ड्रोन्स करके, विच इज एक्सट्रीमली स्मॉल लाइट वेट ड्रोन्स यूज फॉर कवर्ड क्लोज रेंज रिकॉनेसांस मिशंस, राइट? So this is also the type of drones by propulsion systems, right? These are the propulsion systems, and you can check them. Like this is how the propulsion systems are. तो अगर आप loitering munition drones देखेंगे तो आपको fixed wing rotors दिखेंगे, right? इसमें, right? क्योंकि वो एक launch pad से launch होते हैं, right? And it is closer in range, ताकि आपको कुछ destroy करना है. फिर tricopters हैं, hexacopters हैं, quadcopters हैं, fixed wing hybrid VTOLs हैं. VTOLs क्या होते हैं? Vertical takeoff एंड सिंगल रोटर ड्रोन्स हैं, राइट? सिंगल रोटर ड्रोन्स का तो आई थिंक हेक्साकॉप्टर या ये क्वाडकॉप्टर इज द मोस्ट वाइडली यूज सिविलियन ड्रोन एक्चुअली में, राइट? बाकी ड्रोन्स की मिलिट्री एप्लीकेशंस भी हैं. देन व्हाट इज अ टोटल एड्रेसेबल मार्केट ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? तो अगर हम यूएवी की मार्केट देखते हैं, दैट इज अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की मार्केट देखते हैं, तो ओवरऑल मार्केट ग्लोबली $30 बिलियन की है, विच इज प्रोजेक्टेड टू गो टिल $75 बिलियन, ग्रोइंग एट अ डबल डिजिट CAGR. Very few industries across the world are growing at a double digit rate at the moment, right? तो इंडिया की जो ड्रोन मार्केट है बाय 2026 प्रोजेक्टेड है कि 5,000+ करोड़ की हो सकती है. एंड इंडिया के अंदर जो प्रोक्योरमेंट है नियरली $2 बिलियन प्लस का प्रोक्योरमेंट हो सकता है. वो भी हम आगे जाके देखेंगे क्यों हो सकता है जब हम वैल्यू चेन में देखेंगे, राइट? तो इंडिया में भी ये मार्केट अभी जस्ट स्टार्ट ही हुई है. एंड एंटी ड्रोन सिस्टम की भी मार्केट इंडिया में बहुत बड़ी हो सकती है, बिकॉज जहाँ ड्रोन चाहिए वहाँ पे एंटी ड्रोन भी चाहिए. वाई एंटी ड्रोन क्यों चाहिए? अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के अभी कॉल पढ़ेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कहती है कि डिसरप्शन भी थी बिकॉज आई थिंक Q1 में के अंदर, बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जामनगर की रिफाइनरी को वी हैड टू बी वेरी श्योर बिकॉज इट्स अ क्रिटिकल एसेट, राइट? बिकॉज इतनी बड़ी रिफाइनरी है नहीं इंडिया में, तो यू हैव टू बी वेरी श्योर, यू हैव टू प्रोटेक्ट इट, राइट? तो जहाँ जहाँ पे भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्लोज टू द बॉर्डर्स और स्ट्रक्चर्स लाइक जामनगर, भागरा नागल डैम और इवन द अदर लाइक पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर प्लांट्स, वहाँ पे इवेंचुअली आई थिंक एंटी ड्रोन सिस्टम्स लगाने की शायद से नीड पड़ सकती है, बिकॉज दैट इज हाउ द लैंडस्केप इज डेवलपिंग. अगर आप यूएस में देखेंगे तो यूएस में दे आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन डोम सिस्टम. आई थिंक दैट इज लाइक अ एरियल डिफेंस सिस्टम. तो aerial defense system going forward will become even more important. So anti-drone system is just a part of it, right? And that is also again happening in US. US के अंदर भी इन चीज़ों की बात हो रही है, because drone warfare is getting very easy to wage. I think first इंडिया में terrorist attack drone का 2019 में effort try हुआ था जम्मू में. उसके बाद इंडिया ने 2020 में emergency procurement के अंदर इसराइल से Harop drones लिए थे. तो 2020 में like emergency procurement हुई थी after that happened, right? And अभी भी emergency procurement चल रही है and companies are doing field trials of the HAL and basically mail drones, which is currently happening. और loitering munitions की भी orders मिल रहे हैं इंडिया में, right? So different types of player है. तो अभी emergency procurement orders में देखते हैं किन किन companies को मिले. तो जैसे एक्सिस गेट्स को एक 10 to 11 करोड़ का एक ऑर्डर मिला था फॉर हैंड हेल्ड पोर्टेबल काउंटर ड्रोन सिस्टम्स. देन आइडिया, मतलब उनकी रेंज बहुत कम होती है. देन 137 करोड़ का ऑर्डर अभी आइडिया फोर्ज को मिला था फॉर इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसांस ड्रोन्स फॉर इंडियन आर्मी. तो दीज आर इंटेंडेड फॉर काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस. देन सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस को 450 नागस्त्रा लॉइटरिंग म्यूनिशंस का ऑर्डर मिला था as a part of larger order of 7,300 crores that also included Idea Force mini UAVs. तो Idea Force को mini UAVs के भी अभी recently order मिले थे. But that is again this जो इनका इसी order के अंदर included था, जो almost Idea Force का 137 crores का order था, right? But this is how the emergency procurement in the drone space has also happened. बट वेयर जनरली ड्रोन्स का यूसेज कहाँ पे है? अगर आप देखते हैं तो ड्रोन्स एग्रीकल्चर में, एनर्जी एंड यूटिलिटीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंश्योरेंस में, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में, माइनिंग सेक्टर के अंदर यूज हो रहे हैं. इवन फॉर यूज केस ऑफ बेसिकली देयर इज अ टर्म बाय द नेम ऑफ लाइडार करके, कि आपको मैपिंग करनी है. जैसे अगर आपको विलेजेस की मैपिंग करनी है, जैसे अभी आइडिया फोर्ज के ड्रोन्स यूज हो रहे हैं फॉर मैपिंग ऑफ बेसिकली विलेजेस इन इंडिया, राइट? यहाँ फिर आपको जियो स्पेशल मैपिंग करिए, तो उसमें भी ड्रोन्स का यूज केस है अभी, right? So that is where the drones are used. So, but predominant as 50% of the usage of the drones is for the military and the security purpose. उसके बाद second largest share is for the agriculture, which is like, तो मतलब commercial के अंदर 26% agriculture stand करता है. Why so? Because pesticide और insecticide छिड़कना for a farmer from himself is something which can be cancerous at the end of the day. But using a drone to do all these things, it is much easier.
and also helps to give basically data to farmers कि इतने बड़े field में क्या हो रहा है. So I think Dhanuka Agritech is working on I think has actually acquired one of the companies who is the market leader into the agriculture drones in India. But that we have to see how big of the size it is. And I think I can just show you the size. Yeah, so they are actually promoting this drone technology. So they've done they've invested in IoTech World Avigation, a manufacturer of agribot drones, right? But again, this is like our technology for the future. But let's see how it goes. So this I think 2021 से बात करें, but investment उन्होंने अभी recent time में करी है, right? So this is with that example. Then infrastructure construction and mining में use हो रहे हैं. So these are also being used for to inspect power lines, wind turbines. Again देखिए wind turbine पे human के लिए जाना कितना ऊपर मुश्किल है, but drone के थ्रू आप inspection कर सकते हैं. बट इन सारे ड्रोन्स में यूसेज है ISR ड्रोन्स का, दैट इज इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉनेसांस ड्रोन्स का, राइट? तब वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं. फिर लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरी के लिए अभी US और चाइना के अंदर हर चीज़ ये पहले स्टार्ट होती है. हो सकता है US के अंदर भी हो, इवेंचुअली फिर इंडिया में भी आए, बट लेट्स सी हाउ इट हैपेंस. बट अभी इंडिया के अंदर यूज केस इतना नहीं है लॉजिस्टिक्स एंड डिलीवरीज में, ओनली टाइम विल टेल. देन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में फिल्म मेकिंग और न्यूज़ मीडिया और कंटेंट क्रिएटर्स में कैमरा ड्रोन्स यूज़ होते हैं. टिपिकली वो जो चाइनीज़ कंपनी है DJI उसके ड्रोन्स यूज़ होते हैं. फिर पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए भी, जैसे एक कंपनी है बेसिकली US के अंदर बाय द नेम ऑफ एक्सॉन, AXON. तो अब एक्सॉन करके एक कंपनी देख सकते हैं. तो एक्सॉन इज वर्किंग विद पुलिस डिपार्टमेंट and so they have this vertical by the name of Axon Air, which is a fully integrated drone which goes as a first responder, right, for public safety. So that is also they have started. तो Axon actually में taser करके जो tasers आते हैं US में, उनका patent है. तो eventually what they've become is that become a complete solution provider for police department in US, because I think वहाँ पे बहुत सारे protest भी हो रखे हैं because of sometimes because of gunshots by the police, राइट? एन नंबर ऑफ रीजन है. तो वहाँ पे लाइव कैमरा फीड रिकॉर्ड करके जो रिपोर्ट लिखता है, दैट इज ऑल्सो AI का यूज केस है आजकल, बिकॉज एक पुलिस ऑफिसर का 2-3 आवर्स पहले यूज होते थे फॉर टू राइट रिपोर्ट्स इन अ डे. नाउ दैट इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड फुल टाइम कैमरा रिकॉर्डिंग भी है. एंड ऑल्सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर सर्विस के लिए ड्रोन जा रहा है, विच इज अ सर्विस ऑल्सो प्रोवाइड बाय एक्सॉन. That's a company which has become a proxy to making the life of the police department easier over there. So वो भी एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर सर्विस में ड्रोन भेज रहे हैं. दैट्स द बेस्ट यूज केस आई कैन थिंक ऑफ पब्लिक सेफ्टी एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के अंदर, राइट? सो दैट इज ऑल्सो देयर. सो दीज आर द डिफरेंट यूज केसेस ऑफ ड्रोन्स. बट हम लोग मिलिट्री एंड सिक्योरिटी वाले यूज केस की ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज दैट इज वेयर वी आर फाइंडिंग कंपनीज, वेयर वी आर फाइंडिंग बिजनेसेस, वेयर वी आर फाइंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस बिजनेस मॉडल्स. तो जस्ट टू सम इट अप, कि अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रोन्स क्या पढ़े. हमने एक लॉइटरिंग म्यूनिशंस पढ़े, which is like a one-way strike. फिर हमने swarm drones पढ़े, which is like sending small drones together, मतलब which can create a basically havoc for enemy radars. Then हमने male UAVs के बारे में पढ़ा, right? So these are medium altitude flying drones. Then हमने hail UAVs के बारे में पढ़ा, which is high altitude flying drones, right? So these are the type of drones we studied. But now I'll take you to an example, or I'll take you to a case study, which is a new type of drone. So this is again a wingman drone. So this is the future of warfare. So let me just open this over here. So this is an American company which is working in the landscape of this just over here. This is an American company. तो एक Valkyrie करके भी है. तो this is also there, right? So these are wingman drones. Now just look at how again आज हमारा पर्पस क्या है कि हम इंडस्ट्री का पूरा अच्छे से जाने की, इंडस्ट्री डेवलप कैसे करिए, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे और क्या क्लासिफिकेशंस हैं. बट आई रियली हैड फन डूइंग दिस टाइप ऑफ रिसर्च, बिकॉज मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये सारी चीज़ें सीखना और आपके लिए भी आपको सिखाना. तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ ड्रोन विच इज़ मोर लाइक अ स्मॉल फाइटर जेट, विच इज़ लाइक इसको कहते हैं, दिस इज नोन एज अ विंगमैन ड्रोन. तो लेट मी शो यू द एंटायर वीडियो, इट विल एक्सप्लेन इटसेल्फ. Drone is developed by Anduril Industries and utilizes a turbofan engine. Its functionality involves drawing in air through a single intake ramp positioned at the front. Meanwhile, the fuel is sprayed into a specific segment of the jet pipe, aiding in combustion, thereby producing thrust. These drones serve as the F-35 fifth-generation jet and pilots extended wingmen, providing crucial information and intervening to neutralize threats as shown in the animation. So stay tuned and don't miss a beat. What's so special about this drone for the U.S. military?
Fury represents the future of drone warfare as it operates without the need for a pilot, unlike drones such as the MQ-9 Reaper that require a significant number of personnel solely for surveillance and bombing missions. The Fury drones are specifically designed to replace fighter pilots. Yes, that's right. They were designed to act as wingmen using Anduril's artificial intelligence software called Lattice Solutions. In short, they can be used for surveillance, bombing missions, and attack drones. Constructed mainly from carbon fiber and powered by a single 4,000-pound thrust-class turbofan engine, this formidable machine boasts capabilities that enable it to reach altitudes of up to 50,000 feet and achieve transonic speeds of around Mach 0.95. With dimensions of approximately 20 feet in length and a wingspan of 17 feet, this drone starkly contrasts with an F-16 fighter jet, offering a clearer comparison and represent a slightly smaller frame or target for the enemy's radar. Let's delve into how this system operates. Step 1. The command and control center utilizes the Lattice software, much like the one displayed here. This software was meticulously crafted to activate the drone swiftly with a single press of a button, enabling it to autonomously take flight and locate its designated target. Step 2. For the drone operates seamlessly, it requires a runway for takeoff and retracts its landing gear, a process vividly demonstrated in this animation, and hides the landing gear to maintain an aerodynamic frame. Step 3. As stated, it uses a turbofan engine, so air is drawn in through a single intake ramp located at the front, while fuel is sprayed into a specific segment of the jet pipe positioned just behind the sensors. Here the fuel blends with the exhaust gas and ignites, initiating a secondary stage of combustion, thus giving it an astonishing speed of Mach 0.95. Step 4. As previously stated, this drone assumes the role of a wingman, illustrated in these animations. A solitary F-35 pilot possesses the ability to command multiple Fury drones, effectively functioning as an entire squadron. These drones serve as the pilot's extended senses, providing crucial information and intervening to neutralize threats when necessary. This marks the initial phase of the Anduril Industries drone system. This is our first part mini-series regarding modern technology, so do subscribe. Right, so I think this is just an example of how these type of drones are there. वैसे तो आजकल basically naval drones भी आ गए हैं, तो यहाँ पे आप कामाकाजी drone देख रहे हैं. तो I'll attach some of these videos, but एक और ऐसे wingman drone है. I think मैं सारी videos आपको मतलब actually क्या seeing is believing. So there is this drone which is actually now into more like usage is this Valkyrie drone करके. Right, so this is a drone which is in active usage. And now I'll just show you like 1-2 minutes ka video so that you get it what the company does and how this new future warfare technology is getting developed. This is the new Valkyrie drone. It's a prototype of a system that is said to take out targets over a distance of up to 3,000 miles and run on artificial intelligence. The Valkyrie XQ-58A could be an important part of the U.S. military's multi-billion-dollar effort to expand its arsenal with thousands of drones in the next several years, all so it can keep up with increasingly advanced adversaries like China. The Department of Defense has been quite clear that there's a concern about the conventional military balance really shifting in the Indo-Pacific in favor of China, which has more missiles and more people than the United States. And so to offset that eroding conventional balance, there's a view that we need to buy more next-generation drones to bring mass to the theater and reset the regional balance. Here's how the Valkyrie is built for stealth and how it could fit into the U.S. military's plans to establish a fleet of artificial intelligence systems. It's really the only system flying, particularly that's been flying as long as it has, with mission configuration systems, with autonomy, with artificial intelligence, that's in the true attritable class range, which means sub $10 million, fully integrated, mission capable. The Valkyrie, made by defense company Kratos, is designed for stealth missions using parts that are easily sourced. It is still in the development process and will have to compete with other AI-equipped drones for additional military funding. But within its class of drones, around the $5 to $10 million price point, military experts say it's a notable contender. Now basically again example अगर आप यहाँ पे समझेंगे is that कि drone का पूरा cost $4 to $6 million का है. Stealth missions के लिए भी use हो सकता है and is also AI enabled, so they're working on the software aspect also of it. But like just for example अगर एक मतलब हम normal एक fighter jet plane देखेंगे तो $90 to $100 million की cost है, right?
ऑल्सो देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्व इन इट. तो इसमें जी फोर्स का भी कोई एंगल नहीं है. तो एंड्यूरिल के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे थे. एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, देन वी विल गो टुवर्ड्स दिस सेशन अगेन, बिकॉज दिस सीइंग इज बिलीविंग, बिकॉज ये टेक ऑफ द फ्यूचर है, ताकि आपको एक आइडिया लगे कि अभी हम एक बहुत फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं. मे बी ये वेबिनार आपके लिए 2, 3, 4, 5 ईयर्स डाउन द लाइन बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा. These are the drones which are used in the Navy, and these are known as naval kamikaze drones. To dive into the world of the Ukrainian self-made naval kamikaze sea drone, a high-tech marvel that's making waves in naval warfare. Picture this, a naval drone that can extract water from a hatch below it and then unleash a powerful jet of water, propelling it at an astonishing speed of 50 miles per hour. But what's even more mind-blowing is that this cutting-edge technology only costs $250,000, comparing to its potential targets, which are valued at a staggering cost of $650 million. They usually operate like a wolf pack, hunting their target while being controlled through the Starlink video feeds, destroying bridges and recently managing to penetrate an important harbor, resulting with the damage of 2 vessels. We will also be looking into the step-by-step process of how this works and the engineering behind it. All the videos ahead, so don't miss a beat. We're taking a deep dive into the guts of a Ukrainian naval sea drone. And guess what's at the core of this bad boy? You won't believe it. The engine's straight out of a Sea-Doo jet ski. How to kill almost Just a second. this area in just minutes. This simple but brilliant trick you can do tonight to eliminate all. You heard that right. They've ingeniously repurposed a jet ski engine to power this underwater marvel. Let's break down the tech and see how it all comes together. So right at the heart of this aquatic wonder is the trusty engine borrowed from a Sea-Doo jet ski. Just like you fire up your car, this drone kicks into action with a similar ignition system. But here's the kicker. No transmission involved. All the raw power generated by the engine goes straight into a robust drive shaft, which in turn is connected to an impeller. As that engine roars to life, the drive shaft and impeller spring into action. Picture this. The impeller starts rotating, drawing water from the depths around it. This water flows in from the bottom and gets channeled out through the rear end. And here's where things get interesting. The force generated by this jet-like water flow propels the drone forward. It's like when you're out on the water and the jet ski pushes ahead. Only this time it's the drone that's riding the aquatic wave. Right, so basically another, मतलब जो हम बात करें कि it is not just aerial anymore, it is also being used over the water, right? So this is also an example of this, just a second, of this industry that is being made, right? So these are the new types of मतलब warfare, कि किस टाइप के भी warfare हो रहा है, किस टाइप के drones आ रहे हैं, and some of the Indian companies also are trying to indigenize the entire technology, right? तो ये हमने देखे. अभी हम देखते हैं कि पार्ट्स क्या होते हैं ड्रोन में. तो मोटर इज़ अ बिग पार्ट, बिकॉज इनिशियली ऑल द मोटर्स वर बीइंग इम्पोर्टेड इनटू इंडिया. मोटर्स हो गया, देन देयर इज अनदर थिंग जो कैमरा एंड सेंसर्स विच इज ऑल्सो नोन एज, बेसिकली एक ड्रोन के अंदर जो गिम्बल लगता है, दैट्स अ बिग पार्ट, राइट. देन स्टेबलाइजिंग प्लेटफॉर्म एंड ऑल्सो द रोटर्स, प्रोपेलर्स होते हैं. तो एयर फ्रेम इज ऑल्सो बिग पार्ट ऑफ द एंटायर ड्रोन कॉम्पोनेंट्स. फिर बैटरीज ऑल्सो कॉस्ट लॉट, राइट. तो आपने देखा होगा टाइम टेक्नोप्लास्ट अभी बात कर रहे हैं कि कॉम्पोजिट टाइप बेसिकली मटेरियल देगा ड्रोन के लिए, ताकि फ्यूल कॉस्ट कम हो जाए ड्रोन के लिए, बिकॉज इट विल बी लाइटर इन नेचर. तो दैट्स अगेन अ पार्ट ऑफ अ ड्रोन दे आर ट्राइंग टू मैन्युफैक्चर, राइट. तो इंडिया में वन ऑफ द कंपनीज हैज डन 60% इंडिजिनाइजेशन, वन ऑफ द कंपनी क्लेम्स 100% इंडिजिनाइजेशन, 2 companies claim 100% इंडिजिनाइजेशन of all the parts of a drone, right? But majority of the startups today what they are doing कि चाइना से आप ड्रोन मंगा के इम्पोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे असेंबल करके उसको आप बेच रहे हैं, बट इवेंचुअली उसका कोई मिलिट्री एप्लीकेशन नहीं होगा, बिकॉज मिलिट्री के अंदर आपको इंडिजिनाइज कॉम्पोनेंट्स चाहिए. So you need a certain learning curve, and so you need a certain head start versus the peers. So these are different parts of a drone which are used. तो ड्रोन के अंदर एक एयर फ्रेम एंड स्ट्रक्चर होता है, प्रोपल्शन एंड मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, पावर सिस्टम होता है, फ्लाइट कंट्रोल एंड एवियोनिक्स होते हैं, राइट. नेविगेशन एंड टाइमिंग सिस्टम्स होते हैं. देन कम्युनिकेशन एंड डेटा लिंक सिस्टम होता है, दैट इज फॉर कम्युनिकेशन. सेंसर्स एंड पेलोड्स होते हैं, जो गिम्बल होता है और कैमरा होता है, विच इज अ विजुअल एंड थर्मल इमेजिंग विद स्टेबलाइजेशन. पेलोड हैंडलिंग एंड मैकेनिज्म्स होते हैं, तो जैसे गिम्बल कंट्रोलर होता है जो कंट्रोल स्टेबलाइजेशन और पॉइंटिंग करता है, और रिलीज मैकेनिज्म होता है कि अभी पेलोड को रिलीज करना है, राइट. देन थर्मल कंट्रोल सेंसर होते हैं जो हीटिंग, कूलिंग और ड्यू प्रिवेंशन के लिए होते हैं. फिर ग्राउंड सपोर्ट एंड इंटरफेसेस होते हैं, और वायरिंग, कनेक्टर्स एंड मैकेनिकल रिक्वायरमेंट होती है. दीज आर द 10 थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ ड्रोन. Airframe and structure is very important. Like many companies are not able to do it. Propulsion and mechanical is like actually all parts are important, but
सम ऑफ द इंडियन कंपनीज का देखेंगे कहाँ कहाँ इंडिजिनाइजेशन करिए, वो मैं आपको बाद में आगे गोइंग इन द प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा. बट देर आर कंपनीज विच आर प्योरली इनटू कंपोनेंट्स, मतलब क्योंकि हम इंटरनेशनल स्पेस भी कवर कर रहे हैं, सो देर आर कंपनीज विच आर प्योरली इनटू कंपोनेंट्स. जैसे देयर इज वन कंपनी which has cracked the camera sensors and the stabilization imaging part of it. So that's like a monopoly business because of the patents they have. It's an Israeli company. It's a listed company. We'll discuss. There's another company on which Donald Trump's son sits on the board. I think it's a company based out of Florida. It's a company which is indigenizing basically motors and components of drones in US. They recently got a $12 million contract for 3,500 motors. Next year, they're projecting a 20,000 motors का contract, right? Similarly, Indian companies जो drones बना रही है, उन्होंने indigenization काफी सारे components का करा है, वो हम आगे चल के देखेंगे. But remember, these are broadly 10 components लगते हैं drone में. 10 things are required to make a drone. These are broadly the components which are required, right? So China की अभी global dominance है. तो चाइना में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्प और चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेसिकली मिलिट्री ड्रोन्स में है. एंड चाइना की ग्लोबल डोमिनेंस क्यों है? बिकॉज फॉर एग्जांपल एक चाइना का कॉम्बैट ड्रोन का कॉस्ट है $1 to $2 million का, वेयर एक यूएस रीपर का कॉस्ट है $16 million का. आज से कुछ टाइम पहले $30 million का था. सो द कॉस्ट इज फार लेसर, राइट? मतलब in one US Reaper drone cost, you can procure 8 of the Chinese combat drones. So this is why they're exporting to more than 100 countries. Like the UAE or other countries have been buying drones from China, right? So they're world's largest exporter of military UAVs. But क्या है कि because China has a rising superpower, तो इंडिया के अंदर और यूएस के अंदर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी. आज क्या हो रहा है कि इंडिया में अगेन ये स्कटल बट से मेरे पास फीडबैक है आफ्टर स्पीकिंग टू सम ऑफ द पीपल विद इन द मिलिट्री. आपको पता है इंडिया के अंदर एक नॉर्म है इन द मिलिट्री प्रोक्योरमेंट, इज दैट नो सॉफ्टवेयर ऑफ मिलिट्री और नो पार्ट ऑफ मिलिट्री शैल बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम अ नेबरिंग स्टेट. No software or no part of a military equipment or a military equipment shall be procured from a neighboring state. अभी ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अगेन किल स्विच का एक बहुत डर लगता है. देयर इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी. अगर किसी ने इजराइल का पेजर अटैक देखा हो लेबनान में, तो इजरायली मिलिट्री ने क्या करा कि पेजर्स में किल स्विचेस और डेटोनेटर्स फिट कर दिए, विच वॉज बीइंग यूज्ड बाय द लाइक आर्मी ओवर देयर, विच वॉज बीइंग यूज्ड बाय द एनिमीज. एंड दे डेटोनेटेड ऑल द सोलर पैनल्स के अंदर भी उन्होंने फिट करा थे और पेजर्स में भी फिट करा होता द बॉम्ब्स, छोटे छोटे बॉम्ब्स से. एंड दे मेम्ड और किल्ड अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, और द एनिमीज, राइट. बट दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कवर्ट ऑपरेशंस. तो कोई भी कंट्री जब किसी कंट्री के साथ compete कर रही है, वो उनसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल इक्विपमेंट या मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए रिलाई नहीं करेंगे. जैसे आज यूएस में जो मिलिट्री ड्रोन्स है, उसकी एक ऑर्डिनेंस आई थी बाय द यूएस प्रेसिडेंट इन द जून ऑफ 2025, is that we'll make this a critical supply chain and we'll make sure that the entire supply chain is localized, right? Similarly, India ने 2022 के अंदर Chinese drones, DJI जो कंपनी है, फेमस कंपनी है, उसको बैन कर दिया being used in the bordering states. So that is also why कि these drones cannot be exported to India or US. Even in Europe, they are trying to indigenize the drone technology, माने localize the drone technology. तो वहाँ पे कंपनी है Rheinmetall करके, which is working with a lot of companies from US to manufacture drones over there, right? There is also a company, German company by the name of Helsing, which has raised more than $4.5 billion पे valued as वो company. They're also making these drones or unmanned aerial vehicles. So that is also one of the companies that is operating over there. And then India में भी companies और US में भी पूरा ecosystem create हो रहा है post that ordinance came in June 2025. Reason being because of the Chinese dominance. माने इजिप्ट, पाकिस्तान, नाइजीरिया, सऊदी अरेबिया, यूएई, हर जगह यहाँ पे चाइना के ही ड्रोन्स जा रहे हैं. टर्की की भी काफ़ी ड्रोन इकोनॉमी इंटरेस्टिंग है. देर आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग ड्रोन्स टू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज. अगर आपने देखा हो तो पाकिस्तान के जो ड्रोन्स थे, दे केम फ्रॉम टर्की ओनली. सिमिलरली ईरान भी ड्रोन्स बनाती है. Iranian drones are being used by Russia right now. And you know which company is kind of like has industrialized the drone manufacturing right now apart from China? That will be a surprising answer for you. That is Ukraine. Because Ukraine has successfully used water drones, successfully used kamikaze drones, successfully used drones to attack the Russian military. This is why Russia, which is a far bigger country, still hasn't been able to defeat Ukraine comprehensively in a war. Because 80% of the military casualties in the Ukraine-Russia war have been caused by drones. Now just imagine how powerful the entire thought process is, because without using a human, you can cause such basically devastation. Right? तो वेस्टर्न नेशंस में फंडिंग भी बहुत हो रही है अभी.
So I think drones की और UAVs की unmanned vehicles की I think that's the highest amount of funding which has attracted in the European nations within the military landscape. तो funding इस time पे काफ़ी ज़्यादा चल रही है इस industry के अंदर. तो again money is chasing it. And finally US presidents का जो ordinance आया था on drones, this was on June 6, 2025. Right, so this was in White House की website पे कि unmanned aircraft systems, UAS, otherwise known as drones, enhance United States productivity, create high-skill jobs, and these are emerging technologies like eVTOL, electric vertical takeoff and landing. So to make this a localized supply chain, they have passed this ordinance is that कि foreign countries से जो prohibited foreign countries हैं उनसे हम टेक्नोलॉजी नहीं लेंगे. तो उसमें prohibited foreign countries में चाइना भी आती है. सिमिलरली आज मैंने BESS की वीडियो करी थी, उसको भी US लोकलाइज करी है. वैसे ही उस पर एक जो बेसिकली बिग ब्यूटीफुल बिल आया था उसमें भी एक मेंशन करा है फॉरेन प्रोहिबिटेड लाइक एंटिटीज. तो फॉरेन एंटिटीज जो प्रोहिबिटेड है टू सप्लाई इवन द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स, राइट, बिकॉज दैट्स इन्वॉल्व ऑन द ग्रिड, क्योंकि आप ग्रिड को ब्लैकआउट कर सकते हैं. So this is a trend of localizing, creating manufacturing within the countries, which is not just in India, but which is happening across the world. इसलिए manufacturing as a sector within defense or manufacturing in general has legs. अब वो PEB के result से भी अभी देख रहे हैं. अभी हम defense से PEB पे चले गए. But that is how it is happening, is that local, more of localization and manufacturing is happening within the countries itself, right? Because last 20-30 years में क्या हुआ? All the countries outsourced manufacturing to China. And now countries want to bring some part of it on the local shores. So drone is an example of the same. तो अभी हम global drones players देखेंगे, फिर हम Indian value chain देखेंगे और Indian drone players देखेंगे और anti drone systems देखेंगे. तो पहले चलते हैं major global players के अंदर. There is a company by the name of AeroVironment Inc. which is listed on Nasdaq, and they are one of the market leaders in US when it comes to loitering munition drones. Like the loitering munition drones, how they work, एक launch platform होता है. Then you launch the loitering munition. This is how the loitering munition looks like. Then it loiters and gathers intelligence. Then it locks on the target. Then it goes and does a kamikaze attack on the target. Whether it could be a tank, it could be a vehicle, it could be a missile system, it could be an antenna, it could be a radar, etc., etc. So AeroVironment is one of the companies which is the market leader in US in this type of technology. They have a range of more than 30 kilometers. 20 minutes से ज़्यादा endurance है. And effects on targets है जो basically light and medium armor penetration वाले हैं. And speed of this could be 101 kilometers to 161 kilometers per hour. Right, so this is a loitering munition drone by the name of Switchblade. So this is a global company which manufactures AeroVironment. Then another global company is DJI Innovations. That is DJI Science and Technology. So DJI is a Chinese technology company founded in 2006 by Frank Vanguard, which headquartered in Shenzhen and Guangdong. So this company has more than 80 to 90% market share, especially in the drone usage for basically civilian and industrial purposes. And why so is because they have this type of a market share. Because they make the, again, यहाँ का mental model आपको Indian companies में help होएगा. They make flight controllers, gimbals, camera, sensors, software, entire thing in-house. So that gives them economies of scale and that makes them a low-cost manufacturer. Right, so that is the reason why they succeed. एक किसी भी product business में कैसे succeed करोगे? तभी succeed करोगे या तो low cost होगे and you're giving the lowest cost product at a very good product differentiation. The company is able to give product differentiation at a low cost because that is how they are able to differentiate. Right, so videography या aerial photography के लिए this drone is being used. अब आपको ये example याद रखना है दिमाग में because you will find some of the global companies or some of the American and the Indian companies will be following this playbook of localization and indigenization. Right, then देखेंगे तो यूएस ने अगेन ये 2 days पहले की न्यूज़ है. दे आर आस्किंग देम टू बैन ऑटेल रोबोटिक्स एंड DJI इन यूएस. अब ये इनके बैन के बाद क्या होगा कि यूएस के अंदर एक लोकल इंडस्ट्री क्रिएट होने लग जाएगी. एंड हम देखेंगे यूएस के अंदर लोकल प्लेयर्स कौन से हैं जो इससे शायद से बेनिफिट करें. इंडिया के अंदर तो बैंड है ही, पोटेंशियल बैन इन यूएस भी आ सकता है. अभी तो मिलिट्री पर्पसेस के लिए बैंड है, बट इवन फॉर द सिविलियन पर्पसेस बैन करने की बात करें, जैसे टेलीकॉम इक्विपमेंट बैन करा था हुआवे का, या BESS के अंदर अभी क्रिटिकल इक्विपमेंट के अंदर बैन कर दिया है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी बैन हो सकता है बिकॉज US senators are calling for it. Right, so another drone company which exists in the world is Helsing SE करके, which is a German defense technology company founded in 2021.
and they make the software and the hardware part of it. So they have developed surveillance drones and strike drones. आपको याद होगा, strike drones are those drones which are the loitering munition drones. तो loitering munition drones कंपनी ने बनाए हैं, जिसको हम hunter killer drones भी कहते हैं. And it has again 4.5 billion की जो मेरी वैल्यूएशन थी वो शायद से 6 months पहले वाले आर्टिकल थी, बट अभी 12 बिलियन यूरोज की वैल्यूएशन होगी उसकी, राइट. एंड दिस इज अगेन एन एग्जांपल कि हाउ दीज स्टार्टअप्स आर गेटिंग डेवलप्ड, राइट. तो यूरोप का एग्जांपल है. तो यूरोप के अंदर लाइक अगेन लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स एंड ऑल्सो फॉर द सर्वेलेंस ड्रोन्स दिस कंपनी हैज डेवलप्ड. Studying the global context helps you to understand the Indian context also, right? Similarly, एक और कंपनी है यूएस के अंदर by the name of Northrop Grumman Corporation. तो B-52 बॉम्बर्स किसी ने देखे? Have you seen those black stealth bombers जो भी यूएस ने ईरान के अगेंस्ट यूज करे थे? आप देख सकते हैं इंटरनेट पे the stealth bombers, right? So this company B-2 bombers, right? Blackbird जिसको कहते हैं, वो ब्लैक ऐसे ट्राइंगल की तरह एकदम, it looks like a Dorito, right? That is there. So this is one of the manufacturers for it. It's a global company. जिसका डोमेस्टिक बिजनेस तो 5% पे ग्रो कर रहा है, बट इंटरनेशनल बिजनेस 35% पे ग्रो कर रहा है. आई थिंक आज कंपनी 21-22 टाइम्स अर्निंग्स पे है. ह्यूज डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर, एंड नियरली 1/3 ऑफ द बिजनेस, 30 to 33% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम द एविएशन पार्ट ऑफ इट, जिसके अंदर ड्रोन्स भी इंक्लूडेड है. आई थिंक एज ऑफ 2024 $36 बिलियन की सेल में 6 से 7 बिलियन डॉलर की सेल यूएवी से आ रही थी. तो ऑलमोस्ट आपकी 15 to 20% की सेल. एंड दिस इज हाउ देयर ऑर्डर बुक हैज बीन इंक्रीजिंग. द ऑर्डर बुक हैज गॉन टू $92.8 बिलियन एज ऑफ नाउ. तो की प्रोडक्ट क्या है इनका? RQ4 ग्लोबल हॉक रिकॉनेसांस सिस्टम करके, which is a high altitude long endurance system. It's a HAL drone, HAL, hail drone, right? And it gives them the real time high resolution imagery of basically large geographies as well and geographical areas as well. Another drone is that they have is MQ-4C Triton करके, and इन्होंने एक AI powered platform भी बनाया है जहाँ पे इन्होंने different startups के साथ और different companies के साथ अभी एक joint venture भी establish करा है. So this is also one of the companies which has one part of the business coming from the drone business, right? Then another Israeli company which exists or operates over here is Elbit, right? तो Elbit System करके एक company है. तो but it's a huge company, almost $24-25 billion market cap company, which makes the loitering munition drones and the HAL drones, that is high altitude long endurance system. Elbit के I think local partners है इंडिया के अंदर, but those are I think unlisted companies, right? तो but वो unlisted companies के अंदर आ जाते हैं. Then एक और company है Israeli Aerospace Industry करके, which is into the loitering munition and suicide drones. And जब 2019 का I think जम्मू के अंदर ड्रोन अटैक हुआ था, which was foiled successfully, तो 2020 में अंडर इमरजेंसी रिक्वायरमेंट इंडिया ने Harap drones लिए थे, Harap 2 drones, that is Israel made known as Harpy drones, right? So this like India acquired, which were used in Op Sindoor, right? So now there is a company in India, Dynamatic Technologies, which has done a 3-way collaboration with Hindustan Aeronautics, with again secondly the Israel Aerospace Industries and Dynamatic Tech. These 3 companies have done a joint collaboration and a joint venture to 100% then do an indigenization of it. तो I think अभी उनका एक recently एक interview आया था, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि which companies or what type of companies are operating over here. तो चील, कातिल, पतंग, ये 3 ड्रोन्स इन्होंने निकाले हैं इस नाम से. इनका आप एक इंटरव्यू जरूर देख सकते हैं, राइट. अगेन दिस इज लाइक एन इंडस्ट्री ऑफ द फ्यूचर. How that plays out, we have to see, right? So financials, how they evolve, we have to see just over it. Start by talking about what we're seeing happen globally today. There is a fair amount of flux. Geopolitics is dictating who does business with whom at this point in time. There are all kinds of restrictions being put in place. And the view is that India must now focus much more on its own R&D, on its own sort of design and development from a strategic perspective. Now, as Dynamatics and somebody who's worked closely with HAL and DRDO since your inception, how do you look at that opportunity that's opening up today, the indigenization of the defense industry in India? If you look at us 30 years ago, we were involved in Indian R&D for India. And then we focused, the volumes just ran away, and it's essentially they're a global business. Yeah. Very little Indian. We're India for the world, making India for the world. Yeah. And the government has really recognized that there's a real value in India, making India for the world. Looking at the technology denial, the raw material shortages that are developing across the world, and the disaggregation of factoring of the global supply chain, they're looking at Atmanirbhar. Yes. So we are now coming back, making a whole U-turn back
if you look at us in terms of, we have my new garage. I mean, at 59, a new garage, which is called Dynatom. And it's really something very beautiful because we have deep technology. We have developed our own camera systems, our own gimbals, our own autopilots, our own control laws, 5 million lines of code. And based on those subsystems, we develop drones. And if you look at our Cheel or our Katil, it's a hunter-killer that you designed, which is quite unique. We have a bird that's persistent. It flies 8 hours. It captures data. It transfers it electronically to the Katil. The Katil flies in a GPS-denied, radio-denied environment, cannot be jammed. So who came up with the names Cheel and Katil? Well, And there's Patang as well. the Patang is persistent. It's a tethered drone, which you can use for surveillance. And you don't worry because it's electrical. You've got a Jeep with a generator on board. The thing can be up for hours. And then when you're done with your observation post, pull it down and go to the next location. So put it at the borders, put it for crowd management. It's very versatile. The Cheel is an eagle. And then you see our Katil, which is a assassin. We also have a few other birds coming which have Sanskrit and Indian names. Right. So again, they're also participating, but just to give you an idea कि मतलब Indian companies भी ऐसा सब में काम कर रही हैं मतलब. But अभी India के अंदर it's too early to call out कि which company will win or which company might not win. But again, they have done a JV with Israeli Aerospace and with HAL, and let's see how it goes. Let's see. Right. So this is there. Then globally और कौन सी companies, एक Next Vision Stabilized System करके एक company है which is into the camera technology. It's a listed company in Israel. They've done a $300 million का fundraise abhi, which was led by Jefferies. Some of the marquee investors from US have invested in this. And North America से 25% revenue आता है, 4% Europe से आता है, 15% Israel से आता है. So they're the world market leader in the small stabilized video solution powering mission across defense, civil and commercial applications. Imagine a drone that is flying and it has to evade the enemy systems. It is going left, it is going right, and then it has to strike. तो आपको कैमरा और स्टेबलाइजेशन सिस्टम चाहिए. So this company is operating in that. And the company in this, अगर हम जो एंड्यूरिल की बात कर रहे थे, जो एक स्टार्टअप है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली वैल्यू डिफेंस स्टार्टअप जो काम कर रहा है, ऑल ऑफ देम आर यूजिंग नेक्स्ट विजन प्रोडक्ट. सो इट्स लाइक अ प्रॉक्सी टू द ऑटोमेशन ऑफ वॉरफेयर. This company is operating in that type of landscape, right? So again, they have these patents over these products, right? So this is what they have, and it's a significantly lower power consumption product, and it is the world market leader in this, and they've fielded the maximum amount of quantities in this. Similarly, अगर आप like US military spending देखते हैं, so it is poised to go up from $740 billion to $1 trillion by 2026 within a span of 5 years. And European military spending देखते हैं, so they have to spend 2% of the European GDP on this, right? So some percentage of is going on the drones, right? So that is how it is happening. इसलिए अगर आप, I was looking at the forecast of Rheinmetall, which is a German company, and I was looking at the forecast of ThyssenKrupp. So ThyssenKrupp has actually demerged its submarine asset or the deep sea water assets, and they've listed that company differently. And Rheinmetall ने भी differently list करा है. तो मैंने सबके forecast देख रहा था analyst expectation के, सब में 70, 80% revenue growth forecast हो रही है. That is like insane if you think about in economies which are degrowing at the moment, right? So that is again how the global trend is panning out right now. So these are the products that the company is making. The company has Nighthawk products, night vision products है company पास, video processing units हैं, and these are the different cameras that they have made for different types or weightages of drones that the company is making at a very lesser weight they make, so that drone के ऊपर power consumption कम हो. And then this is how the growth rates have been. Just imagine company was $4.5 million का सेल था कंपनी का 2019 में. आज कंपनी का सेल $160 million के आसपास 2025 का टारगेट है. आई थिंक दे विल एंड अप अचीविंग इट और माइट इवन ओवर अचीव बिकॉज ऑफ द ग्रोथ दे हैड इन द रीसेंट क्वार्टर, एंड इट्स ग्रोन एट 90% plus CAGR. I think trades at 30 times earnings still. Gross profit margins are also really high. EBITDA margins are also really high. PAT margins are also really high. But you have to see what they do with the fundraising that they've done. So they effectively did a QIP recently, right? So this is also another company that exists, which is a market leader.
see, I'm trying to open your mind towards the global companies which also exist. Another global company which exists, तो अभी recently Poland ने air defense systems deploy करे थे because Russian drones entered the Polish airspace. So there is a company in Poland by the name of Lubava, which is a defense and security equipment provider, which was founded in 1951. So they recently won a contract for to cover a combat engineering requirement and reconnaissance equipment. So they provide these drone-defying individual screens. It's like a camouflage or concealment equipment to hide heat signature from drones, because drone sensors work on heat signatures. So they have made this drone-defying individual screen. So it's like a camouflage which they are providing to the Polish military. This is also a company that exists in the international landscape. Then coming to the American landscape, two very interesting companies. One is Ondas Holdings. एंड सेकेंड वन इज दिस Ondas होल्डिंग्स के अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है. तो यहाँ पे पूरा डोनाल्ड ट्रम्प का पूरा एंगल है इसमें, तो ये वाली कंपनी भी हम देखेंगे. तो Ondas Holdings is also one of the company which is again they have built end-to-end fully automated UAV system for on-demand aerial data operations in complex systems, right? So इन्होंने 2-3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं. एक तो आयरन ड्रोन सिस्टम बनाया है जो फुल्ली ऑटोनॉमस UAV इंटरसेप्टर है, विच इज लाइक एन एंटी ड्रोन सिस्टम. तो एक तरीके का बॉक्स है, एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं एंड दे इंटरसेप्ट द एनिमी ड्रोन्स, राइट, basis the software that they have and basis the radar that is fit over it. Then there are Optimus systems, which is a UAV system, and this is again a drone in a box platform. एक box के अंदर numerous drones हैं and it operates in extreme conditions as well, right? And it is also there for thermal sensing, terrain modeling, 2D and 3D mapping, and it also has payload delivery. It can also be used for military applications. These are two young and emerging companies in US. One is Ondas Holdings. So Ondas Holdings, this is how their box looks like. तो आपको दिखे एकदम. These are the boxes which can be used, right? So again, they have also developed this Kestrel system करके इन्होंने एक चीज बनाई है, which is like aerospace management platform that integrates active radar, passive detection, and fuse command and control interface, right? So मतलब एनिमी ड्रोन्स को डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये सिस्टम बनाया है, राइट? एंड दिस इज द ऑप्टिमस सिस्टम एंड द आयरन ड्रोन सिस्टम. So recently they've got big orders also from the American military for this, right? So this is another company that is there. Then another one is this Unusual Machines करके company है. तो again Unusual Machines क्या है कि they have indigenized almost 60, पहले 44% था, बट रिसेंट आफ्टर इंडिजिनाइजिंग द कैमरा ऑल्सो तो लोकलाइज कर दिया है यूएस के अंदर ड्रोन कंपोनेंट्स. तो क्या क्या लोकलाइज करा है? दैट इज फ्लाइट कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, मोटर्स, cameras, video transmitter, frames, radio receiver, and transmitter. All these things they have localized. So these things they have localized in a drone, and so they are Donald Trump's son's backed company, and they recently secured a big order, right? So you'll see ki, I think this recently secured an order for 3,500 drone motors and other components to the army as latter expands its drone capabilities. And next year they're guiding ki they could get additional 20,000 parts order for Unusual Machines, right? तो एक्चुअली यूएस के अंदर ये बड़ी एक सिंपल थीम है कि मागा दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो थीम है कि मैन्युफैक्चरिंग बैक टू द यूएस होनी चाहिए. एंड एक्चुअली में यूएस ड्रोन इंडस्ट्री 50 years back was thriving because there was no Chinese competitors, but China decimated the industry. So there are no US drone part manufacturers. This is one of the only companies, and they have introduced 3 components, which is 44% of the cost. But अभी एक और component introduce करा है, which is now 60-65% of the cost. And US में drone component market is $1.5 billion की market है. And the type of orders they are getting, even if they garner 10% market share, their business could become $150 million in size, right? This is also one of the companies that exists. They are into the component landscape manufacturing. Again, this is a listed company in US, right? So, I think that is what I've observed over last 1 year is that whatever the government is doing, अगर government ban कर रही है components की तो proxies वहाँ पे बनेंगे. So this is here where you have to do a top down and bottoms up marriage. Right, so this is also one of the companies in the US landscape. फिर wingman drones की हमने videos तो देखी ली. Right, अब हम चलेंगे towards the Indian landscape. But ये हमारा TAM, value chain, global landscape and international players cover है. अब हम Indian players की तरफ आएंगे. Now आगे चलते हैं अब Indian drone landscape पे. तो I'll highly encourage you all of you guys. मैं आपको ये share भी कर दूंगा. Exponent Tribe. So these guys are my friend only. They run a PMS and they have written a very detailed article on the Indian drone landscape. Now, अभी करंट इंडिया की जो ड्रोन मार्केट है, दिस इज हाउ इट इज.
वैल्यूड एट, और दिस हाउ कितनी बिग हो सकती है एज पर द डिफरेंट assumptions. तो इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द ड्रोन मार्केट टुडे बिलोंग्स टू द इंटेलिजेंस, सर्विलेंस एंड रिकॉनेसांस ड्रोन्स, which is 125 million in size, $125 million. Combat drone is $15 to $20 million in size, but now it is increasing exponentially post Operation Sindoor because it was used successfully, right? Then logistics and cargo drone $15 to $20 million की है, but ये भी इसका यूज केस इंक्रीज हो रहा है. फिर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड इस सब की मार्केट भी $15 to $20 million साइज की है. टोटल में अभी $150 to $175 million की मार्केट है इंडिया के अंदर, राइट? तो अभी इंडिया के अंदर और क्या हो रहा है कि जो इंडिकेटिव एरियाज ऑफ ड्रोन प्रोक्योरमेंट आए हैं इंडिया में, तो जो मीडियम ऑल्टीट्यूड बेसिकली ड्रोन्स हैं एंड जो हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं, सो यहाँ पे नियरली $5 to $10 billion का टैम हो सकता है नेक्स्ट 5 years के अंदर, बेसिस द रिक्वायरमेंट्स दैट हैव कम अप. Large platforms like Hail, Mail and UCAVs might still be imported, but Indian firms are strong in tactical IC, like intelligence, surveillance, reconnaissance drones, loitering and logistics drones, where local technology is already mature. तो stealth UCAVs, integrated surveillance and targeting systems, तो ये भी $1.5 to $2 billion की मार्केट हो सकती है. देखिए आज ये मार्केट कितने की है, 125 million की है, तो 10x ग्रोथ आ सकती है इंटीग्रेटेड एंड सर्वेलेंस टारगेटिंग सिस्टम्स में. लॉइटरिंग म्यूनिशंस आज $15 to $20 million की जो मार्केट है, पोटेंशियली $1 billion प्लस की मार्केट हो सकती है, क्योंकि इंडिया में अभी मार्केट डेवलप हो रही है. ड्रोन बेस्ड बेसिकली लाइडार ट्रैक अलाइनमेंट, तो बेसिकली मैपिंग के लिए जो ड्रोन्स यूज होते हैं, दैट कुड बिकम अ $250 to $300 million मार्केट. एंड ड्रोन बेस्ड माइन डिलीवरी सिस्टम कुड ऑल्सो बी अ $50 to $100 million मार्केट. एंड $5 to $10 billion की मार्केट मीडियम ऑल्टीट्यूड और हाई ऑल्टीट्यूड की हो सकती है. सो दीज आर द डिफरेंट मार्केट्स एंड देयर पोटेंशियल इन इंडिया, राइट? वैल्यू चेन क्या इंडिया के अंदर, दिस इज हाउ द वैल्यू चेन इज एंड दिस इज वेयर डिफरेंट प्लेयर्स आर. नाउ टीयर 2 कंपोनेंट प्लेयर्स हैं. अगर देखेंगे तो टीयर 2 कंपोनेंट प्लेयर्स कौन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, मोटर्स, प्रोपेलर्स, बैटरीज, कंपोजिट, एयरफ्रेम्स, मटेरियल्स, ऑप्टिक्स, चिप्स और सेंसर्स बनाते हैं, जो हमने पहले डिस्कस करे कि 10 पार्ट्स ऑफ द ड्रोन वैल्यू चेन है. तो ये कंपोनेंट्स वाले हैं. अब जैसे एक वेक्टर करके कंपनी है, एक आई थिंक वेक्टर एविएशन या टेक्नोलॉजीज करके कंपनी है. दिस कंपनी हैज बीन अक्वायर्ड बाय जेनटेक. नाउ दे क्लेम कि 100% इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन्स वेक्टर हैज ऑलरेडी मेड, राइट? सो दिस इज व्हाट दे टेल एंड दे विल से कि दे विल गो इनटू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल. They acquired this company, I think, अभी recently 51% acquire करे, majority holding, I think eventually it will come there, but this company they have acquired. Bharat Components है, Rockman है, NXP है, right? So all these are there in unlisted space, but Vector belongs to Zentek at the moment. इसमें 10 to 50% gross profit margin हो सकते हैं. फिर tier 1 system and subsystem companies हैं, जो avionics, payloads, comms, data links, navigation, connectivity modules, ground control stations बना रही हैं. इसमें गोदरेज एरोस्पेस, एक्सिसकेट्स, अस्टेरिया और टॉनबो इमेजिंग, विच इज अ इन्वेस्टी ऑफ HBL इंजीनियरिंग इज ऑल्सो देयर. तो HBL इंजीनियरिंग होल्ड्स लाइक स्टेक इन टॉनबो इमेजिंग. तो टॉनबो इमेजिंग में भी अभी फंड रेज हुआ है अनलिस्टेड स्पेस में. आई थिंक दे माइट ऑल्सो IPO इन नेक्स्ट 1 to 2 years, राइट? सो यहाँ पे 30 to 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है. फिर OEM कंपनी है, जो डिजाइनर और इंटीग्रेटर है, जो ड्रोन्स बनाती हैं, दैट इज आइडिया फोर्ज, डायनामेटिक टेक जो हमने देखी, अस्टेरिया है, न्यू स्पेस करके एक कंपनी है. दीज आर द OEM कंपनीज एट द मोमेंट जो ड्रोन्स पूरा मैन्युफैक्चर कर रही हैं, राइट? देयर इज आल्सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स व्हिच इज वर्किंग इन द OEM लैंडस्केप. सो दे आर आल्सो वर्किंग ऑन आर्चर ड्रोन्स, right? So that is for intelligence and surveillance reconnaissance. So let's see, they have 2 or 3 partners over there, how they go about it. But anti-drone systems mein Bharat Electronics is quite big. I think they recently got a 600 crore order for anti-drone systems and radars at the moment, right? So this is how the Indian landscape looks like. एक और कंपनी है एनाड्रोन, जो OEM और डिजाइन इंटीग्रेटर है. वो अपना सब सिस्टम भी खुद बना रही है, कंपोनेंट्स भी खुद बना रही है. देव 70% इंडिजिनाइजेशन कर दिया. उसकी एनुअल रिपोर्ट भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी एनाड्रोन की. सो दैट्स एन अनलिस्टेड कंपनी. वहाँ पे भी अभी आई थिंक रिसेंटली फंड रेज हुआ था. सो दैट ऑल्सो इज अ कंपनी दैट एग्जिस्ट एंड दे आर इनटू पायलट एंड टेस्टिंग ड्रोन्स एट द मोमेंट, राइट? तो पहले हम देखते हैं डिफरेंट इंडियन कंपनीज क्या काम कर रही है. एक तो देखिए हमारा आइडिया क्या है कि इस सेक्टर को समझने के लिए हम ये सेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस सेक्टर अभी इवॉल्व होएगा नेक्स्ट 2-3 years में, बट यू विल ऑलरेडी बी अवेयर कि कहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज करके कंपनी है, बट इट इज एट 1,30,000 crore मार्केट कैप, बट ऑलरेडी 15,000 crore ऑर्डर डिफेंस से आता है. एंड अगेन ये लोग लॉइटरिंग म्यूनिशंस के अंदर है, विच इज नागस्त्रा करके इनका ड्रोन है, which is, and they are also getting into Nagastra 2 and Nagastra 3. So this is a higher range drone, माने higher kilometer range है, 500 to 1,000 किलोमीटर की इनकी रेंज है नागस्त्रा 2 एंड नागस्त्रा 3 की.
एंड दे हैव आल्सो डन अ टाई अप विद ZAL फॉर अ हायर रेंज एंड पेलोड मॉडल. तो अगेन आप इंटरनेशनल कंपनीज के साथ जेवी करके टेक्नोलॉजी ला रहे हैं. बट अगेन वैल्यूएशन वाइज आई डोंट अंडरस्टैंड, बट स्टिल इट्स अ कंपनी विच एग्जिस्ट इन द लॉइटिंग म्यूनिशन स्पेस. एक टाइम पे 1% ऑफ द बिजनेस डिफेंस से आता था, 20% ऑफ द बिजनेस डिफेंस से आने लग गया. राइट, एंड एक टाइम पे ऑर्डर बुक 500 करोड़ होती थी डिफेंस की, आज 15,000 करोड़ की होगी लास्ट 3 years में. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ द जे कर्व इज कमिंग इन द सेक्टर. भारत फौज ने भी टाई अप करा है एक ड्रोन कंपनी के साथ, आई थिंक इजरायली ड्रोन कंपनी के साथ करा है, फॉर टू मैन्युफैक्चर मेल एंड हेल ड्रोन्स. बट दैट टाई अप इज स्टिल देयर. लेट्स सी हाउ इट कम्स टू फ्रूइशन. Then Idea Forge is an interesting one. That this is a company I'm studying more at the moment because इस वेबिनार से मेरे भी स्क्रीनिंग एक्टिविटी है. मैं भी बिजनेसेस ढूंढ रहा हूँ अभी. वैल्यूएशन या फिर आगे से कच करने से पहले इस बिजनेसेस ले ऑफ द लैंड तो समझ आना चाहिए, जो इस वेबिनार का पर्पस है. तो देखिए, जो इंडिया में स्मॉल यूएवी मार्केट है या फिर ISR मार्केट है, उसमें आइडिया फोर्ज का 50% मार्केट शेयर है, बिकॉज दे बीन वर्किंग इन द ड्रोन लैंडस्केप सिंस 2007. तो कंपनी इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस ड्रोन्स और बेसिकली लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स में है. तो लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स का इन्होंने अभी नया प्लेटफॉर्म जस्ट लॉन्च करा है. येटी के नाम से इनका प्लेटफॉर्म है. एंड इनका जो इंटेलिजेंस एंड सर्वेलेंस ड्रोन्स के, दे हैव आल्सो लॉन्च दिस प्लेटफॉर्म. एंड 2007 से ये इस टेक में काम कर रहे हैं. तो इनके ड्रोन की रेंजेस हैं, आप रेंज देख सकते हैं कहाँ से लेके कहाँ तक रेंज जा रही है. दैट इज लाइक लेस देन 100 मीटर, फिर 100 to 1 किलोमीटर, फिर 1 to 3 किलोमीटर, फिर 3 to 10, फिर 10 to 18, then more than 18, then like more than 18. That is in the long ranges, right? So that is what the company is doing, and this is the product that the company has. तो कंपनी ने Netra 5 करके प्रोडक्ट अभी recently commercialize करा है, right? So this is up to 10 kilometers. So this is a surveillance drone, so security and surveillance drone है, right? So they have recently commercialized this, and civil purposes के लिए Q4i and Q6 V2 drone है इनका. And Netra 5, Netra V4 Pro, this is for dual usage of defense and civilian. And instead of defense के लिए Switch और Switch V2 करके drone है. These are VTOLs, that is vertical takeoffs, right? So this is again पूरा intelligence and surveillance drone के अंदर कंपनी ऑपरेट करती है. And basically logistics drones है, उनके लिए भी Yeti करके इन्होंने एक प्लेटफॉर्म और ड्रोन लॉन्च करा है to carry 150 to 600 kg of payload. That is to deliver to the जो भी use case हो सकता है logistics के लिए, and it can fly for 6 to 10 hours. Now this deck or their presentation was the most comprehensive which I read in the industry, in the drone landscape. Their annual report was also a must read because इस कंपनी का मतलब कहते हैं ना कि ये कंपनी जीती और मल्टी ड्रोन्स में है, मतलब फोकस ही ड्रोन्स है. तो अभी लंपी बिजनेस होएगा क्योंकि बहुत अर्ली स्टेजेस में इंडस्ट्री है, बट इंटरेस्टिंग लगेगा कि 2-3 years में कंपनी इवॉल्व कैसे होती है. स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में स्टॉक ओन नहीं करता, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ, मैं आपके साथ ये स्क्रीनिंग एक्टिविटी कर रहा हूँ. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस कि मेरे लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं है, तो मैं आपके साथ सीख ही रहा हूँ ये इंडस्ट्री. क्योंकि मेरे लिए इन वेबिनार्स का क्या फायदा है, द मोर आई टीच द मोर आई लर्न, द मोर वी स्पेंड टाइम टुगेदर द मोर यू एंड आई लर्न. दैट्स द आइडिया ऑफ दीज वेबिनार्स. तो कंपनी ने 60% इंडिजिनाइजेशन कर लिया है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट. अगेन आप देखेंगे कि कहाँ का इंडिजिनाइजेशन करिए है. ऑटो पायलट में पेटेंट मिला है, रेडियो डेटा ट्रांसमिशन में पेटेंट मिला है, पेलोड गिम्बल स्टेबलाइजेशन में, पेलोड डिजाइन में दे हैव अ पेटेंट नाउ. GNSS डिनाइड नेविगेशन में पेटेंट है. बेसिकली अगर मतलब लॉट ऑफ टाइम्स योर ड्रोन्स कैन बी जैम्ड, तो GNSS डिनाइड नेविगेशन कंपनी ने उस पर पेटेंट लिया है. एयर फ्रेम, मोटर प्रोपेलर्स एंड बैटरी के ऊपर भी कंपनी ने पेटेंट इस टाइम पे लिया है, राइट. एंड ऑल्सो फॉर द प्री फ्लाइट सेल्फ चेक एंड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम्स. तो अगेन 89 ग्लोबल पैटेंट्स है कंपनी के पास, एंड 60% इंडिजिनाइजेशन करी है कंपनी ने. तो इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट में दिस वाज द वन ऑफ द कंपनीज विच गॉट एन ऑर्डर. तो कंपनी का आज 50% बिजनेस डिफेंस से आता है, 50% सिविल से आता है, एंड कंपनी को भी 137 करोड़ का ऑर्डर मिला इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर, एंड 400 करोड़ के ऑर्डर्स और पाइपलाइन के अंदर है, राइट. एंड इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स इन 400 करोड़ के पाइपलाइन ऑर्डर्स में इंक्लूडेड नहीं है. तो नेक्स्ट 1 to 2 years में ये ऑर्डर्स भी कंपनी को आने चाहिए, राइट, एज पर देयर कॉन्फ्रेंस कॉल. सो देयर कॉन कॉल्स आर अ मस्ट रीड फॉर एनीवन हु वांट्स टू ट्रैक दिस सेक्टर वेल. अगर आपको इस सेक्टर को ट्रैक करना है, इस सेक्टर को समझना है. बट दिस इज वन ऑफ द कंपनीज विच ऑपरेट्स है. बट माइंड यू रिस्क फैक्टर क्या है, प्रोडक्ट कंपनी है, लंपी होएगा. एक क्वार्टर में सेल्स इवेपोरेट हो जाएगी, एक क्वार्टर में सेल्स बम्पर आएगी, फिर एक क्वार्टर में सेल्स इवेपोरेट हो जाएगी, फिर एक क्वार्टर में सेल्स बम्पर आएगी. अभी बेस इतना बड़ा नहीं हुआ क्योंकि इंडस्ट्री अभी जे कर्व के थ्रू जा रही है. तो इंडस्ट्री को 1-2 साल लगेंगे बिफोर इट स्टार्ट्स बिकमिंग मोर स्टेबलाइज एंड नॉर्मल इन नेचर. So it could be that we are studying this business much ahead of what the industry's evolution is at that time, right? Because इनका पूरा business ही ड्रोन से आता है, ऐसा नहीं है कि कोई और business हो इनके पास अभी, right? So another company Anadrone की जो हमने बात करी, जो टेस्टिंग ड्रोन्स के अंदर है, तो they are into indigenously designed and developed manufactured drones, so 70% indigenous content है. So they are also getting into this Abhay drones.
सो अबे ड्रोन्स मतलब वो स्वार्म ड्रोन्स के अंदर ये लोग आ रहे हैं, राइट। तो इन्होंने अदिति प्रोग्राम अभी इंडियन डिफेंस यहाँ पे इंडिजिनस उनसे विन करा है, राइट। सो बेसिकली जो IDEX प्रोग्राम होता है उसमें इन्होंने अदिति चैलेंज विन करा है, विच इज़ फॉर द अबे सिस्टम। जहाँ पे स्वार्म ड्रोन्स हैं, राइट। सो अगेन दिस विल फ्लाई विद अदर प्लेन्स एंड दिस विल बी यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड म्यूनिशंस। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बाय द वे आइडिया फोर्ज इज ऑल्सो लॉन्चिंग ड्रोन्स, उनके अभी फील्ड ट्रायल्स और टेस्टिंग चल रही है। देन शक्ति ड्रोन्स है कामाकाजी के लिए, they're also getting Triton, which is autonomous underwater and surface vehicle, and they're also getting Dhanush, which is the vehicle mounted surface UAV launchers. But this is into an unlisted space, but again idea क्या है पूरा एक आपके साथ कवर करने का। देन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आर्चर UAV प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहा है। तो नेक्स्ट 2 to 3 years में दे माइट गेट बिग ऑर्डर्स फ्रॉम दिस, राइट। दिस इज द ओनली थिंग दैट दे हैव कवर्ड। तो आर्चर UAV प्रोग्राम इन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट पे कवर करा हुआ है। And they're also developing the loitering munition and logistics drones, right? And also a male variety of drone requirement which has come. तो इंडिया में आप देखेंगे नेक्स्ट 3-4-5 years में ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, एंड ऑल दीज कंपनीज आर ऑलरेडी ऑपरेटिंग देयर। तो लेट्स सी विच वन विंस, बट आइडिया क्या है इस वेबिनार का, आप ट्रैक करें, आप सीखें। ये वेबिनार ले ऑफ द लैंड निकले है, ताकि बिकॉज इंडस्ट्री बहुत अर्ली इन द एवोल्यूशन स्टेजेस है आज। देन जेनटेक ने वेक्टर टेक्निक्स करके कंपनी एक्वायर करी है, विच इज इनटू द कंपोनेंट्स। दे क्लेम दे हैव 100% इंडिजिनाइज द कंपोनेंट्स ऑफ ड्रोन्स, देन दे विल गेट इनटू ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग जेनटेक। बट दिस इज अ वेरी रीसेंट एक्विजिशन, Q3 के अंदर एक्विजिशन हुई है। जेनटेक में भी ऑर्डर बुक की डीग्रोथ हुई है, बिकॉज ऑर्डर्स स्पिल्ड ओवर एंड ऑर्डर्स लेट भी हो गए। पर अभी इनको एंटी ड्रोन सिस्टम का एक ऑर्डर मिला है 37 करोड़ का। एक बार FY21 में 37 करोड़ का ऑर्डर मिला था। बट एंटी ड्रोन सिस्टम में जेनटेक क्लेम्स की जिस टाइप के फ्रीक्वेंसी के अंदर ये लोग एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहे हैं, दैट इज व्हाट इज बिकॉज मिलिट्री, तो आई थिंक वो ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर 2 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज होती है। आई थिंक 6.4 GHz आई थिंक वाज वन, एंड देयर वाज अनदर वन विच इज यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड सिविलियन पर्पसेस। बट मिलिट्री के अंदर कोई भी यूज हो सकती है, राइट। दे क्लेम टू दे हैव डेवलप्ड एन लाइक एंटी ड्रोन सिस्टम which is able to counter the latter instead of the former, because अगर आप former frequency जगह दूसरे टाइप का ड्रोन यूज कर ले, दूसरी फ्रीक्वेंसी में कर ले, तो आपका एंटी ड्रोन सिस्टम फेल हो जाता है, राइट। सो दैट इज व्हाट द कंपनी क्लेम्स। आई डोंट नो फॉर श्योर बिकॉज आई हैव नॉट डन लाइक ऑन द ग्राउंड चेक्स, राइट, बिकॉज कौन ही करने देगा इसके ऐसे। बट आपको सब वैलिडेशन होगा ऑर्डर बुक में। तो देखते हैं टू की इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे जाती है, क्योंकि अभी तो ऑर्डर बुक डीग्रोथ कंपनी में प्ले आउट हो गई है, राइट। तो कंपनी अब पेसिमिज्म स्टेज की तरफ जा सकती है। पर डेफिनेटली कंपनी पास इंडिजिनियस कंटेंट और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी तो एग्जिस्ट करती है, विच दे हैव डेवलप्ड ओवर मल्टीपल डेकेड्स। तो इट्स वन ऑफ द कंपनीज टू वॉच आउट फॉर इन दिस लैंडस्केप, राइट। तो ये हमारे इंडिया के अंदर ये सारे प्लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट शेप एंड फॉर्म में। बट इंडिया के अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम की भी मार्केट अभी ग्रो कर रही है, तो एक बार एंटी ड्रोन सिस्टम मार्केट को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो काउंटर ड्रोन सिस्टम मार्केट आज वर्ल्ड में $2.7 बिलियन की है, बट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ CAGR ऑफ 27%। ड्रोन मार्केट 10% पे ग्रो करेगी, काउंटर ड्रोन 27% पे ग्रो करेगी। इसका सिंपल रीजन है कि जितने वर्ल्ड में ड्रोन्स होंगे उतने एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए होंगे आपको, एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स आर lesser susceptible to change because drone technology keeps changing. So companies which have cracked the anti-drone systems could be very interesting to study, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि इंडिया में आज 500 से 600 करोड़ की मार्केट है, जो नेक्स्ट 3 to 5 years में नियरली 10x पे ग्रो कर सकती है, बिकॉज इसमें हैंड हेल्ड जैमर्स और पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स आते हैं। तो एंटी ड्रोन और CUAS लाइक, तो अभी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अभी 47 पब्लिक टेंडर्स इशू हुए थे लास्ट 1 month में, जिसमें से 22 उसमें से एंटी ड्रोन सिस्टम्स के लिए इशू हुए हैं, अंडरस्कोरिंग द फास्ट राइजिंग डिमांड, राइट। तो दिस इज अगेन फ्रॉम द एक्सपोनेंट ट्राइब्स लेटर, ऑल ऑफ यू कैन रीड इट। तो 2 तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम होते हैं मेजरली। एक तो हार्ड किल काउंटर सिस्टम है, तो जैसे इंडिया में L170 गन्स हैं जो इंडिया ने पहले ली थी, तो उनको बेसिकली रडार्स के साथ माउंट करके दैट वर यूज इन द ऑपरेशन सिंदूर, राइट। सो $1 to $2 बिलियन का टाइम है हार्ड किल सिस्टम्स का। दैट इज टू बेसिकली, हार्ड किल क्या है कि आप ड्रोन को फोड़ रहे हैं बेसिकली इन क्रूड टर्म्स, कि आप ड्रोन पे बेसिकली गन मार के, इंटरसेप्टर मार के, मतलब अब तो वर्ल्ड में बेसिकली जो लेजर बेस्ड सिस्टम है उसकी भी बात हो रही है, कि आप ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो दिस इज हार्ड किल। These are basically kinetic defeat systems, right? Then soft kill systems होते हैं, तो smart adaptive jammers और soft kill systems क्या होते हैं? Basically these are systems जहाँ पे आप ड्रोन का जो फ्रीक्वेंसी है या ड्रोन का जो कनेक्शन है विद द पर्सन हु इज यूजिंग इट, आप उसको जैम कर दे, बेसिकली रडार लगा के आप उसको जैम कर रहे हैं, राइट। सो देन द ड्रोन फॉल्स आउट ऑफ द स्काई। बट आई थिंक सॉफ्ट किल सिस्टम्स है, इवेंचुअली दे माइट बिकम ऑब्सोलीट,
बिकॉज अभी अ लॉट ऑफ दीज ड्रोन कंपनीज हैव स्टार्टेड डूइंग व्हाट कि जैसे रशिया ने कैसे इवेट करा सॉफ्ट किल सिस्टम्स यूक्रेन के, कि उन्होंने ऑप्टिकल वायर लगा दी, एक छोटी सी वायर लगा दी ड्रोन के साथ। तो उसको एक्चुअली जो मतलब जो सिग्नल्स है, इट्स नॉट कमिंग वाया फ्रीक्वेंसी, इट्स कमिंग वाया वायर। तो हाउ विल यू जैम इट, हाउ विल यू डू सॉफ्ट किल? सो यू नीड हार्ड किल सिस्टम्स, राइट? तो इंडिया की जो आकाश बैटरीज आपने देखी होंगी, तो दैट इज ऑल्सो हार्ड किल सिस्टम, बट दैट इज मोर एक्सपेंसिव। बट मेजरली L170 गन के साथ, रडार्स के साथ ये सिस्टम यूज होंगे। तो कंपनीज जो रडार्स बनाती हैं, चाहे वो अस्ट्रा माइक्रोवेव हो या सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स जो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो, या विन्यास हो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो जो पूरा सिस्टम बना रहे हैं, दीज आर द टाइप ऑफ कंपनीज विच विल हैव अ big edge when it comes to radars. Then companies which are into the hard kill element of it, companies like Zentech जो hard kill soft kill दोनों बना रही हैं, and companies like Axis Cage जो handheld jammers बना रहे हैं, these are some of the companies which exist. But recently भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 600 crores का ऑर्डर मिला था, so that was a big order which they got in the anti-drone systems. I think it will have radars and everything in it, but this is how the value chain looks like. कि tier 2 components के अंदर there are companies which are into computing boards, power electronics, जैसे Astra Microwave, BL, Axis Cage, Data Patterns, and also at Centum over here, right? Then there are tier 1 subsystem and system companies, which is Tonbo Imaging, Alpha Design. Alpha Design is owned by Adani now. तो Alpha Design drones के अंदर भी है, but I think अभी उन्होंने एक field trial fail कर दिए थे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आया था। But they are also there in anti-drone systems. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन रोबोटिक्स है। ग्रीन रोबोटिक्स की इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इन्होंने इंद्रजाल करके एक AI लेड सिस्टम बनाया है, वो हम देखेंगे। देन OEMs है विच आर डिजाइन एंड इंटीग्रेटर्स लाइक Zentek, BL, पारस डिफेंस, अडानी डिफेंस। पारस डिफेंस के भी टाई अप्स हुए हैं, तो देखना पड़ेगा कैसे चलता है। बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और Zentek आर ऑलरेडी देयर एंड दे हैव ऑलरेडी वन ऑर्डर्स फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री। So let's see how big these orders become. But Zentek is more of a product company, so sales will always be lumpy. अगर ऑर्डर नहीं आया तो क्या करोगे? डीग्रोथ देखोगे आप, जैसे अभी लास्ट 2 क्वार्टर से देख रहे हो। आई थिंक दिस ईयर कुड बी अ डीग्रोथ ईयर फॉर Zentek. लेट्स सी हाउ दे अगेन, यहाँ पे आपको सिर्फ ऑर्डर बुक एंड ऑर्डर बुक को ट्रैक करना है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक अभी 1 लाख करोड़ प्लस की ऑर्डर बुक होगी। आई थिंक अभी QR SAM 400 सिस्टम्स का भी ऑर्डर इनको मिला है, ऑलमोस्ट 27,500 करोड़ का, जिसके रडार्स इन टर्न अस्ट्रा माइक्रोवेव बना रहे हैं। Right, that is also a aerial defense system that is being used, but मतलब basic जो QR SAM system है, that is for smaller ranges, right? The SAM 400 तो S400 system तो रशिया के हैं, but QR SAM system is for the smaller ranges, right? तो वो भी इंडिजिनाइज हो रहा है फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर। Astra Microwave is into the radar supply of it, so they can get a big order for it. That is also sort of a defense system, but not typically drone defense system, but like a hard kill type system है to deflect the incoming missiles, right? So that is also there. Another company which operates here is again this company listed space में by the name of Megasoft. I think the company is linked with Satyam Group, इसलिए मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। पर Megasoft का मर्जर हो रहा है Sigma Advanced System से। Sigma Advanced System डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर है, which in turn is doing collaboration with Green Robotics, and उनका एक इंद्रजाल AI ड्रोन सिस्टम करके है, which I think अभी रेड फोर्ट के ऊपर भी यूज हुआ था in the इंडिपेंडेंस डे। अगर आप यहाँ चेक करेंगे, जस्ट आई शो दिस टू यू, इंडिपेंडेंस डे में जो रेड फोर्ट सिस्टम है उसके ऊपर भी ये सिस्टम यूज हुआ था, राइट? सो दिस इज व्हाट दे आर मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज देयर। सो जैसे आयरन डोम सिस्टम है इसराइल में, तो हैदराबाद बेस्ड कंपनी ग्रीन रोबोटिक्स हैज डेवलप्ड इंद्रजाल, एन AI पावर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंटी ड्रोन टेक सॉल्यूशन which that throws a 360-degree protection against drones for a range up to 4,000 square kilometers. Through its modular and network architecture, the platform was first deployed in 2021 to protect Independence Day celebrations at Red Fort. Right, so Indrajal is powered by a company's own proprietary AI-enabled platform called Sky OS. Right, so this is also an anti-drone system, and right, so Indonesian Army भी इस drone को use कर रही है to protect world's largest refinery that covers bigger than London and India's third largest airport. And this company was set up in 2008, spun off Indrajal as a separate entity in 2003. Indrajal platform has not just military application but also deployed for protecting critical infrastructure. तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने देखा है कंपनी मेगासॉफ्ट करके, इट हैज बीन continuously being in non-stop upper circuits. I think it is related to the Satyam Group 2008 वाला, but they have sold their land recently in the Sri City जहाँ पे अभी PG Electroplast ने land लिया है. But what is happening, there's a merger that is happening where there, again, I don't have zero clue about the promoter integrity because of the past,
मैं बस बता रहा हूँ कि ये कंपनियां एग्जिस्ट करती है. एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डोंट ओन शेयर्स. आई एम जस्ट कवरिंग ले ऑफ द लैंड फॉर यू. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दैट्स द पर्पस ऑफ दीज वेबिनार्स. ले ऑफ द लैंड, क्या कंपनी क्या कर रही है, इंडस्ट्री एग्जिस्ट कैसे करती है. So they are merging Sigma Advanced System, which is already doing sales of 225 to 230 crores, which in turn is collaborating with Green Robotics to manufacture the anti-drone system for them. This is how the entire landscape of this company is. And these are some of the businesses which exist in India. अभी मेरे को अगर conclusion में देखना हो तो मैं कहाँ पे इंडिया में देखूंगा कंपनीज. तो एक तो देयर इज अ कंपनी डायनामाइटिक टेक जो एविएशन में मतलब एरोस्पेस में भी अच्छा काम कर रही है. ड्रोन में भी उन्होंने 100% इंडिजिनाइजेशन कर दिया है. इजरायली एरोस्पेस के साथ काम कर रहे हैं. एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है जो एंटी ड्रोन सिस्टम में ह्यूज ऑर्डर्स लैंड कर रही है. एंड ऑल्सो ड्रोन्स के अंदर आल्सो ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स और इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस ड्रोन्स के अंदर अभी काम कर रही है नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के अंदर. और रडार्स के अंदर ऑलरेडी दैट कंपनी इज द मार्केट लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के अंदर भी है. दैट्स लाइक द HDFC बैंक ऑफ दिस इंडस्ट्री विच कैन माइट ग्रो एट 20% फॉर ईयर्स टू कम. देन अस्ट्रा माइक्रोवेव है जो रडार्स के सप्लायर में हो सकती है टू कंपनीज लाइक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स. डेटा पैटर्न्स भी वहाँ पे आती है. इनके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स आते हैं लाइक सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर कंपनीज जो लाइक बिल्ड टू स्पेसिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. बट ड्रोन का कितना पोर्शन है वो देखना पड़ेगा. फिर आइडिया फोर्ज इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी टू स्टडी बिकॉज दे गॉट वन ऑफ द अर्लीस्ट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर. अब अर्लीस्ट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑर्डर उन्हीं कंपनीज को देते हैं जहाँ पे ट्रस्ट हो, जहाँ पे इंडिजिनाइजेशन हाई हो. आई वाज ट्रैकिंग द कंपनी सिंस IPO केम एट अ वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन. 4-5 हजार करोड़ मार्केट कैप पे आया था. 2,000 करोड़ हो गया मार्केट कैप. तो आई विल स्टिल वेट फॉर मोर ऑर्डर्स टू कम ओवर देयर जस्ट टू सी कि कैसे कंपनी इवॉल्व करती है. फिर Zentek इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी बिकॉज ऑफ देयर एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी. बिकॉज 2021 में दे ऑल्सो गॉट अ 135 करोड़ प्लस ऑर्डर एंड रिसेंटली ऑल्सो 37-38 करोड़ का एक ऑर्डर मिला एंटी ड्रोन सिस्टम्स में. बट वहाँ पे ऑर्डर बुक जब पिकअप होगी सिमुलेटर्स के अंदर एंड एंटी ड्रोन के अंदर, दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू ट्रैक क्लोजली. बट द कंपनी ओन्स इट IP इन हाउस विच इज वेरी रेयर टू फाइंड इन कंपनीज. एक डेटा पैटर्न में ही है, एक Zentek के अंदर ही है, एक भारत इलेक्ट्रॉनिक के अंदर है वो. तो ये 3-4 कंपनीज में ही इंडिया में IP इन हाउस ओनरशिप है. देन देयर इज अ कंपनी जो हमने अभी बात करी, पारस डिफेंस ने भी टाई अप करा है फॉर लॉजिस्टिक्स ड्रोन्स, राइट. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. देन अनलिस्टेड में एरा ड्रोन कंपनी है जो टेस्टिंग और पायलट ड्रोन्स के अंदर है. बट दिस इज हाउ द ले ऑफ द लैंड इन इंडिया एट द मोमेंट लुक्स लाइक. फिर हमने बात करी मेगासॉफ्ट की जो सिग्मा एडवांस सिस्टम के साथ मर्जर हो रहा है. तो आई थिंक दैट मर्जर गॉट रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द NCLT. लास्ट 1 ईयर से वो चल रहा है. And that company in turns collaborates with Green Robotics, which owns the Indrajal entire Indrajal wala system. ये company own करती है. But I have no understanding of the corporate governance of that company. And like I'm just telling you what exists in the landscape, right? Then components के अंदर एक Vector Electronic Components exist करती है जिसको Zentek ने अभी recently acquire करा है, जिसने 100% indigenization का claim करा है कि ड्रोन के सारे पार्ट्स हम इंडिया में बना सकते हैं. ये तो हुआ इंडियन लैंडस्केप. अब ग्लोबल लैंडस्केप में क्या इंटरेस्टिंग लगता है? Especially wherever the government is going, US companies look interesting because they have put a ban on the Chinese drones, especially in military purpose. अगर civilian purpose के लिए भी ban कर देंगे तो बहुत ज़्यादा interesting हो जाएगा because that will make sure कि companies like unusual machines होगी. या फिर हमने एक और कंपनी जो उसमें कवर करी थी, आई थिंक एक होल्डिंग्स करके कंपनी थी, ये unusual machines थी and Ondas holdings थी. So these companies could benefit from like localization in US, right? So these companies are early in their journey. Then we also covered a big company over there, basically by the name of Northrop Grumman Corporation, right? So again, 1/3 of the business comes from aviation over there or aerospace over there. Let's see how that evolves. Then एक Next Vision Stabilized System करके हमने कंपनी कवर करी, which is into all the modern form of sensors and camera, which is a proxy to all these drone companies. So that is also a company that exists over there. So internationally, these are some of the companies. Europe के अंदर again we covered one of the startups in Europe, जो German startup है by the name of Helsing, which has become 12 billion euros in size. And Rheinmetall करके भी एक German company है, but the valuation is very expensive, 70-80 times PE पे है. So I don't understand it, but they are doing JV with US companies to manufacture drones locally. Right, and even I think we covered companies like Dajiang Innovations (DGI) and also AeroVironment, which is a market leader in loitering munitions in the US. But US में I think unusual machines और companies like Next Vision और companies like Ondas Holdings जो अभी छोटे बेस के साइज से, और अगर large cap में बनना है तो companies like Northrop Grumman Corporation. These are some of the businesses you can study independently with an open mind. I think this is the webinar in a nutshell. This is the entire drone industry in a nutshell. एंड इंडिया में एक न्यू स्पेस करके भी कंपनी है विच इज इनटू द ड्रोन लैंडस्केप, बट अगेन वो अनलिस्टेड कंपनी है. एक अल्फा डिजाइन करके भी कंपनी है विच इज ओन्ड बाय अडानी नाउ, जो एंटी ड्रोन और ड्रोन सिस्टम के अंदर है.
तो ये जो भी एक इंटरेस्टिंग कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड स्पेस में ऑपरेट करती है. So this is the entire webinar on the drone and anti-drone system. Did you love the webinar? Did you enjoy the webinar? Because it took a lot of effort to decode the entire value chain and the lay of the land. Just drop a hell yes in the comments. Now coming to the conclusion of the entire webinar. तो हमने इस वेबिनार में क्या सीखा कि ड्रोन एंड एंटी ड्रोन सिस्टम्स की क्या नीड है. हमने पूरी इंडस्ट्री की वैल्यू चेन बारे में सीखा कि क्या मोटर्स होती हैं, राइट, ड्रोन के अंदर गिम्बल्स क्या होते हैं. Then we learned about the international players like Next Vision Infra देखा. हमने भी देखा Unusual Machines करके कंपनी है. फिर हमने इंडियन प्लेयर्स में देखा जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, जेनटेक है, आइलिया फोर्ज है और कौन कौन सी कंपनी इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काम कर रही है. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपकी इस वीडियो से क्या की लर्निंग्स थी, बिकॉज दिस इज द टाइप ऑफ वीडियोज दैट वी कीप मेकिंग. एंड नेक्स्ट संडे को वी बी मेकिंग अ वीडियो ऑन all the proxies of AI and what is the entire industry when it comes to AI and the demand for data centers. With this, I'll see you in the next business analysis of SOIC. Make sure that you subscribe to the channel. Jai Hind.